ओके सो काली हमें मॉनसून देखी थे टुडे विल बी डिस्कसिंग साइक्लोन्स ओके सो कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज साइक्लोन मते लगे कि ओडिसा पिला को पचारिया दरकार नहीं सेने निदरे भी साइक्लोन ऊपर ऐसे लिखि दे परिए एते देखि चंदे सेने आराम से कहि देबे राइट सो व्हाट इज साइक्लोन Sir, these are low pressure areas where winds are blowing towards it, and they're enclosed by isobars with ओके increasing pressures outside. enclosed by isobars With increasing pressures outwards. ओके फाइन तो क्लोज आइसोबार्स था ओके फाइन सो जनरली साइक्लोन टा कोन so let's say there is a low pressure zone okay let's say there is a low pressure zone ठीक अछि एंड जेतबेले गोटे लो प्रेशर जोन थिबो आमे जानि छे कि सराउंडिंग एरिया रे माने लो प्रेशर हाई प्रेशर सबले रिलेटिव थाए राइट लो प्रेशर हाई प्रेशर सबले रिलेटिव थाए सो जेटा लो प्रेशर रीजन लेट्स से ए रीजन रे हाई प्रेशर अछि लेट्स से ए रीजन रे हाई प्रेशर अछि सो वी नो दैट जेतबेले लो प्रेशर रीजन गोटे थिबो हाई प्रेशर रीजन रो लो प्रेशर रीजन को विंड फ्लो करे राइट हाई प्रेशर रीजन रो लो प्रेशर रीजन को विंड फ्लो करे तो जेतबेले विंड फ्लो करे ओके आमे गोटे जिंस जानि छे कि हमरो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे हमरो कोरियोलिस फोर्स एक्ट करे आ कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे को डायरेक्शन एक्ट करे राइट रे ओके इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू इट्स राइट तो भाबो एबे ए विंड टा लेट्स से ए विंड जतले एबे मूव करूची टुवर्ड्स द लो प्रेशर एबे कोन हबो ए विंड टा हमरो डिफ्लेक्ट हे जिवो टुवर्ड्स इट्स राइट माने आकू राइट को गोटे पुश मिलिवो आ ए विंड टा याडे डिफ्लेक्ट हो सिमिलरली ए जो विंड टा अछि ए जो हाई प्रेशर टू आस्टू विंड टा ये जतले याडे मूव करची आकू भी कोन करा हबो आ राइट को पुश करा हबो सो इट विल आल्सो मूव लाइक दिस सिमिलरली ए जो विंड टा हाई प्रेशर लो प्रेशर को आछि आकू भी पुश करा हबो ये कोन हबो ये भी मूव करिवो टुवर्ड्स इट्स जस्ट ओके तो कोन हबो ए विंड टा भी मूव करिवो टुवर्ड्स इट्स राइट राइट तो कोन हुए जेतबेले गोटे इंटेंस लो प्रेशर थाए जेतबेले गोटे इंटेंस लो प्रेशर थाए सेतबेले ता चारि पटो जेतबेले हाई प्रेशर जोन रु सेठी की विंड टा फ्लो करे सेतबेले कोन हुए से विंड टा जेतबेले फ्लो करे कोरियोलिस फोर्स पई से विंड रे कोन हुए गोटे कर्वेचर क्रिएट हुए कोरियोलिस फोर्स पई से विंड रे गोटे कर्वेचर क्रिएट हुए आ से विंड टा से लो प्रेशर जोन को जनरली कोन हुए हमर जदी भाबा हाई प्रेशर जेमदी आईटीसीजेड हमें आईटीसीजेड जानचे सेठी कोन हुए आईटीसीजेड रे एटी लो प्रेशर थाए आउ दी पटू हाई प्रेशर आसे आउ ए लो प्रेशर जोन को से माने फिल कर दियंती राइट ए लो प्रेशर जोन को से फिल करन किंतु जेतोले हमें टुवर्ड्स नॉर्थ आसिया मु एटा कहिबी काहे कि एटी फिल हे जाय आउ ऊपर काहे कि प्रॉब्लम है जेतोले हमें नॉर्थ लेट्स से 15-20 डिग्री जेड को आसिया सेठी कोन होबे आपण कोरियोलिस फोर्स पई से लो प्रेशर फिल हे पारेनी आउ से विंड टा कोन होबे से लो प्रेशर चारि पटे बुलिवा स्टार्ट करे कारण एटी डिफ्लेक्ट होची आउ से कोन करिवो से एपडू तो विंड आसियो से ता राइट को डिफ्लेक्ट होबो और कंटीन्यूअसली से विंड टा कोन होबो एम्ति बुलिवा स्टार्ट करे राइट तो ए जो मूवमेंट ऑफ द विंड ए जो मूवमेंट ऑफ द विंड को आमे कोन को एडो को आमे को साइक्लोन ठीक अछि आमे आउट की डिटेल रे देखिबा एडु मु कोन लेक्चर देखु साइक्लोन्स आर रोटेटिंग सिस्टम्स
rotating system where winds converge towards a central low pressure. जेमती एठी मु देखैली, this is a central low pressure. तो एठी कोन हबो, एटा गोटे central low pressure जोठी की wind converge करचंदी. Wind converge करके एठी rotate करिवे. Okay, so what is a cyclone? It is a rotating system where wind converge towards a low pressure and spiral upwards. तो कोन हुए सेठी wind आपनकर चारि पटु wind आपनकर कोन हबो, low pressure हला. एठी कोन हबो, wind converge करिवो ए low pressure को, converge करिकी ता चारिपटे rotate करिवो. तो एटा गोटे rotating system where wind converge to a low pressure. Okay, so that is your cyclone. तो तापर मु गोटे जिंस कहली, it spirals upwards. एटा काहे की स्पाइरल करे सेटा हमें किछि समय रे जानिबा. ओके, सो आई गेस साइक्लोन रो डेफिनेशन आपन को जणा पड़ला कि साइक्लोन रो डेफिनेशन कोन, आउ गोटे हल्का आइडिया आसला कि व्हाट इज साइक्लोन. आमे डिटेल रे देखिया, बट डेफिनेशन समस्त क्लियर हला. यस सर. ओके, सो साइक्लोन दा हमरो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे, ठीक अछि, एंटी क्लॉकवाइज वे, आउ सदर्न हेमिस्फीयर रे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे हमरो एंटी क्लॉकवाइज वे, आउ सदर्न हेमिस्फीयर रे क्लॉकवाइज वे. ता रीजन मु एठी ऑलरेडी आपन कहि सरलेनी कि कोरियलिस फोर्स पई कोन होबो, जेतले गोटे लो प्रेशर थिबो, कोरियलिस फोर्स पई जेतले गोटे विंड आसीबो, से विंड डिफ्लेक्ट होबो टुवर्ड्स इट्स राइट. तो से विंड टा याडे डिफ्लेक्ट होबो. तो दिस मूवमेंट इज आवर एंटी क्लॉकवाइज. जेमति घंटा चले ता उल्टा पुल्टा मूवमेंट. किंतु सदर्न हेमिस्फीयर रे कोन होबो, सदर्न हेमिस्फीयर रे तो लो प्रेशर थिबो, आउ आमे जानते सदर्न हेमिस्फीयर रे विंड क्वाडे डिफ्लेक्ट हुए टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट. तो भाबो सदर्न हेमिस्फीयर रे गोटे विंड आसुची, आकु क्वाडे पुश होबो, ये टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट पुश होबो. लेफ्ट पुश हले कोन होबो, सी विंड रो चारि पटे मूव करिवो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जेमति क्लॉक मूव करे. ओके, एटा क्लॉकवाइज हे गला, एटा एंटी क्लॉकवाइज हे गला नॉर्थ रे. सो हमरो साइक्लोन टा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे एंटी क्लॉकवाइज वे, आउ सदर्न हेमिस्फीयर रे क्लॉकवाइज. ओके, सो हमर जो साइक्लोन अछि, साइक्लोन भी हमरो दी टाइप साइक्लोन अछि. गोटे थर्मल इन ओरिजिन, आ गोटे फ्रंटल इन ओरिजिन. एटा ओरिजिन बेसिस रे तारो क्लासिफिकेशन है जे, दैट वन इज थर्मल एंड अदर इज फ्रंटल. फ्रंटल कोन हमें देखिबा नेक्स्ट, किंतु आगो हमें थर्मल टा कोन जानिया. थर्मल साइक्लोन जोटा सेटा कोन हुए, thermal cyclone, from the name itself you can guess that this is something related to temperature. Thermal cyclone is something related to temperature. So jo cyclone da something which is related to temperature, we call that cyclone as thermal cyclone. Eta temperature ya heat pai ए cyclone टा form होची, माने आरो सोर्स टा ए cyclone रो सोर्स हला heat. ओके, आ गुटे हम देखिले कि टेम्परेट साइक्लोन. ओके, दैट इज फ्रंटल इन ओरिजिन, आउ ताकू डायनामिक इन ओरिजिन भी कहते. व्हाई फ्रंटल और डायनामिक, एठी किछि टेम्परेचर पई होउनी, बट ड्यू टू सम डायनामिक्स, और दैट इज द फ्रंट्स. एठी काहे की फॉर्म हुए, टेम्परेट साइक्लोन टा हमरो फ्रंट पई फॉर्म हुए, आउ हमरो थर्मल साइक्लोन टा हमरो टेम्परेचर पे फॉर्म हो. एटा हम देखिबा आफ्टर थर्मल साइक्लोन्स, और द साइक्लोन दैट इज फॉर्म ड्यू टू हीट. ओके, सो लेट्स फर्स्ट सी द साइक्लोन दैट इज थर्मल इन ओरिजिन, एंड दैट इज आल्सो नोन एज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ओके, जोटा थर्मल इन ओरिजिन ताको हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन नारे भी जानि जाय. ओके, सो आमे भी जानले कि साइक्लोन कोन. साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे केमती मूवमेंट हुए, आउ तारो साइक्लोन आउ सदर्न हेमिस्फीयर रे केमती मूवमेंट हुए, आउ टाइप्स दे जानले. टाइप्स रे ट्रॉपिकल आउ टेम्परेट. सो लेट्स फर्स्ट सी द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हुए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रो ओरिजिन इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन फेवरेबल कंडीशंस. ओके, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हुए तारा ओरिजिन इट्स डिपेंडेंट ऑन सर्टेन फेवरेबल कंडीशंस. द फर्स्ट कंडीशन इज
ट्रॉपिकल साइक्लोन पाई जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हुए ता पाई आपणकर गोटे लार्ज सी सरफेस दरकार, लार्ज सी सरफेस। ओके, लार्ज सी सरफेस दरकार। लार्ज सी सरफेस काहेकि दरकार? कारण लार्ज सी सरफेस हेले तार डेप्थ टिके अधिका रहइबो। डेप्थ अधिका हेले कोन होबो? डेप्थ अधिका, डेप्थ that should be more than around 70 meters depth। माने जो सी सरफेस रे हमर साइक्लोन जो साइक्लोन टा फॉर्म होबो तार डेप्थ होबा कथा अराउंड 70 meters। काहेकि 70 meters होबा दरकार? बिकॉज let's say this is your oceanic water। Okay, this is your oceanic water and this is the top 70 meters। ठीक अछि? आमे जानि जे कि ओशन रो कि सी रे जो वाटर थाए तारो जो सरफेस वाटर टा हमरो पेनिट्रेशन जो इंसोलेशन हुए जो सोलर रेडिएशन थाए से पेनिट्रेट करि पारे टिल 200 meters पाखा बाकी, राइट? 100-200 meters पाखा बाकी। आ जो टॉप लेयर जो वाटर टा थाए सेटा कोन थाए? बहुत अधिका वार्म थाए। अब जेमते हम तळ को जिबा सडनली कोन होबो? धीरे धीरे माने फर्स्ट तो 200-300 से धीरे धीरे पानी रो टेम्परेचर कमे, किंतु आफ्टर 200 meters पानी रो टेम्परेचर कोन बहुत सडनली कम हे जाय। तो कम हे गले कोन होबो? इठी कोन रहला? ठंडा पानी रहला। ओके, तळे कोन हला? इठी कोल्ड वाटर रहला, ऊपर हमरो वार्म वाटर रहला। ठीक अछि? तो जदी आरो डेप्थ कम होबो तो बारंबार जदी डेप्थ कम होबो बारंबार कोन होबो? तळ पानी संगे रे ए पानी रो जेतल सर्कुलेशन होबो, लेट्स से एठी पानी रो डिस्टरबेंस होउची, तो एठी कोन सरफेस पानीटा एई पाखा पाखी जे डिस्टरबेंस माने जोटा ऊपर अछि सेटा कोन हला? एई पाखा पाखी जे जीवो पुणी ऊपर पळे आसीबो। किंतु भाबो ए डेप्थ बहुत कम हे जिवो। डेप्थ कम हे गले कोन होबो? तळे ठंडा पानी रहला तो ऊपर रो जो वार्म वाटर अछि सेटा डिस्टर्ब हे जिवो। तो सेथि पई कोन होबो? तारो हीट टा कमी जिवो। एंड आई हैव सेड दैट the thermal cyclones or tropical cyclones are the reason for their origin is heat that they get। will come to that, सेटा आपण जानिबे केमिति, किंतु one of the reason is heat। so we want the water to remain heat for the origin of the cyclone। सेथि पई हमर फर्स्ट जो कंडीशन हला लार्ज सी सरफेस एरिया रहबा दरकार एंड इट शुड बी अराउंड 70 meter डेप्थ। तो एटा हमर फर्स्ट condition, depth of the sea water, it should be more than 70 meters। okay, so that cooler water below do not mix with the warm water। then the next condition is sea surface temperature should be more than 27 degrees Celsius। sea surface temperature should be more than 27 degrees Celsius। why? again the same reason कि मु कहिथिली कि आपनकर कोन दरकार? हीट दरकार। आ जेतले 27 डिग्री सेल्सियस रे कम हे गले कोन होबो? जो वाटर रो टेम्परेचर जो वार्मनेस सेटा कोन होबो? कमी जिवो, राइट? वार्मनेस कमी जिवो। तो एथुरु कोन होबो? मु एबे आपनको धीरे धीरे गोटे गोटे पॉइंट आसीबो, तापरे वी विल कंपाइल दिस पॉइंट टू अंडरस्टैंड द मेकेनिज्म ऑफ साइक्लोन। एबे जो कंडीशन रे धीरे धीरे गोटे गोटे पॉइंट आसीबो। ओके, आप एबे टिके एब्स्ट्रैक्ट फील होबो कि ई पॉइंट टा काहे की दरकार, ई पॉइंट टा काहे दरकार। तो जेतो बळे पॉइंट सब सरी जिवो, जेतोले मु कंडीशंस कहि देबी सेतो बळे लास्ट को हम कंपाइल करियो, सेतो आपण बुझी परिबो। तो एठी काहे की 27 डिग्री सेल्सियस दरकार? साइक्लोन रो गोटे बहुत ट्रॉपिकल साइक्लोन रो गोटे नुहे दैट द मेजर ingredient or the major requirement of tropical cyclone is moisture। ठीक अछि? बिना मॉइस्चर रे ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म ही परिबोनी। बिना मॉइस्चर रे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म ही परिबोनी। सो हमु कोन दरकार? मॉइस्चर दरकार। आ जदि 27 डिग्री सेल्सियस रु कम हे गला ताहले कोन होबो? हमरो ठीक से वेपर मिलिबोनी, हमरो ठीक से पानीटा वेपराइज होबोनी, आउ हमको मॉइस्चर मिलिबोनी, व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो दिस इज the second requirement, that the sea surface temperature should be
27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस हेले कोन हबो ए जो टेम्परेचर टा हमर कोन करिवो ए जो टेम्परेचर रे हमर कोन हबो वाटर वेपोराइज हे परियो। ठीक अछि, तो मॉइस्चर मिलिबो। तो एथुरु कोन हबो एबे जेतो बळे लेट्स से हमर एबे मॉइस्चर अछि एयर रे। ओके, मु कोन कहितली फर्स्ट कि ओटे लो प्रेशर जोन रे एटा हो। तो जेतो बळे लेट्स से एठी गोटे लो प्रेशर जोन अछि आ लो प्रेशर जोन रे आमे जानि छे कि लो प्रेशर जोन रे कोन हुए एयर राइज करे कि डिसेंड करे लो प्रेशर जोन रे। यस, Rise. एयर राइज करियो, राइट। तो लो प्रेशर जोन रे एयर राइज करियो। आ लेट्स से एठी 27 डिग्री सेल्सियस रो अधिक हमकु मिलुची टेम्परेचर। ता माने कोन हबो एठी एयर रे एबे हम पाखरे वेपर रहिबो, एयर रे मॉइस्चर रहिबो हम पाखरे। ओके, आमे जानि छे कोन कि राइज करे लो प्रेशर जोन रे जेतोले लो प्रेशर जोन रे राइज करे ई मॉइस्चर टा कोन हबो धीरे 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 एबे ऊपर को राइज करियो। ओके, ई मॉइस्चर टा एबे धीरे 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 ऊपर को राइज करियो। जेतोले ऊपर को राइज करियो एटा कोन हबो कंडेंस हबो। एटा कोन हबो कंडेंस हबो, राइट। तो मु एबे आपन गोटे कांसेप्ट कहबी दैट इज latent heat of condensation. Latent heat of condensation. Latent माने कोन something which is hidden, something which is hidden. Latent माने something which is hidden. Okay, so latent heat माने कोन the heat that is hidden, the heat that is hidden. Okay, so latent heat of condensation कोन एबे हम जो कहले जो वेपर थिबो। ओके, से वेपर टा एक्चुअली कोन सेटा वाटर, राइट। वाटर टा कोन करची किछि टेम्परेचर गेन करिछि, किछि टेम्परेचर गेन करिछि, किछि टेम्परेचर गेन करला परे ए जो वेपर टा कोन हेछि सॉरी जो वाटर टा कोन किछि टेम्परेचर गेन कला परे हमरो वेपर हेकी फॉर्म हेछि, राइट। वेपर हेकी फॉर्म हेछि। ता माने आमे कोन आमे एटा भी कहि परिया कि ए जो वेपर टा फॉर्म हेछि वाटर रु माने ए वेपर रे किछि हीट हिडन हेकी अछि। यस और नो, किछि एनर्जी फॉर्म रे हीट हिडन हेकी अछि। Yes, sir. यस, सो ए जो हीट टा जेतो बळे एबे तापर हम जानले कि किछि हीट हिडन हेकी अछि। जेतो बळे तापरे एबे हमर कोन हबो हमरो एयर टा राइज करिवो ता संगे कोन हबो ए जो वाटर मॉलिक्यूल सॉरी ए जो वेपर टा ये भी कोन करिवो एयर संगे राइज करिवो। राइज कला पर कोन हबो कंडेंस हबो। कंडेंस माने कोन सीए कूल हबो। कंडेंस माने कोन से कूल हबो। कूल हेले कोन हबो ता पखरे जो हीट थिला से हीट टा रिलीज हे जिवो। ता पखरे जो हीट थिला से हीट टा रिलीज हे जिवो, राइट। तो एठी कोन होतला वेपर थिला ऊपरु गला, ऊपरु जाई कोन हला एटा कंडेंस हे गला। कंडेंस जेतळे हे गला ई आ भीतर जो हीट टा थिला से हीट टा कोन हला रिलीज हे गला। that is your latent heat of condensation. Condensation ପାଇଁ जो latent heat टा रिलीज हला that we call as latent heat of condensation. एटा बुझा गला समस्तଙ୍କୁ latent heat of condensation? बुझा गला? Yes, sir. ओके, सो एबे हमर कोन हबो latent heat of condensation। तो इठी मु कोन कहितली कि हमर साइक्लोन ପାଇଁ गोटे लो प्रेशर दरकार। तो लो प्रेशर अछि तो ई लो प्रेशर रे एबे कोन होउची एयर राइज करची। जते राइज कला ठीक अछि एठी कोन होउची कंडेंस हबो। जते कंडेंस होउची से कोन करची आउ हीट रिलीज करची एटमॉस्फेयर को, आउ हीट रिलीज करची। जते आउ हीट जते आउ गरम हबो तो कोन हबो ई जो लो प्रेशर ता अछि सेटा आउरी इंटेंसिफाई हबो कि नै। आगुरु लेट्स से गोटे अमाउंट ऑफ लेट्स से किछि भी यूनिट अछि 5 यूनिट्स ऑफ जहा भी हीट अछि तो एठी कोन होउची लो प्रेशर आपनकर हेची। तो एबे जो वेपर टा ऊपर को जाउची सी जते कंडेंस होउची सी आउ हीट रिलीज करिवो से रीजन रे से एटमॉस्फेयर रे। तो सेठी कोन हबो ए जो लो प्रेशर अछि आउरी इंटेंसिफाई हे जिवो। ओके, आई होप एटा समस्त बुझी गले। Yes, sir. ओके ओके, सो
that is your second point, that is sea surface temperature should be more than 27 degrees Celsius so that it can provide enough moisture, and the condensation will provide latent heat of the condensation of that moisture will release the latent heat. Okay, so that is your second point. Now let's discuss the third point. The third point is requirement of Coriolis force. Coriolis force एटा एबे समस्या जानि सारिबेनी कि काहेकि दरकार Coriolis force? सर्कुलर मूवमेंट पे. Yes, Coriolis आम साइक्लोन टा कोन गोटे सर्कुलर मूवमेंट आ Coriolis force आमे जानि छे कि विंड को डिफ्लेक्ट करछि आ से विंड को डिफ्लेक्ट कला परे से विंड टा कोन होछि गोटे सर्कुलर मूवमेंट रे बुलुछि. यदि Coriolis force न रहइबो ताले कोन होबो साइक्लोन फॉर्म होबोनी. तो आपण माने जानि थिबे कि इक्वेटर रे Coriolis force केते थाए मैक्सिमम, राइट? सर 0. गुड, वेरी गुड. इक्वेटर रे मिनिमम थाए, दैट इज 0. Coriolis force इक्वेटर रे न थाए. तो सेथि पई हमर कोन हुए इक्वेटर रे आपनकर साइक्लोन मिलेनी. ओके, सेथि पई कोन हुए इक्वेटर रे साइक्लोन मिलेनी बिकॉज़ वी डू नॉट हैव Coriolis. The impact of Coriolis force is negligible or 0 at equator. सेथि पई इक्वेटर रे Coriolis force मिलेनी. और जनरली 5 डिग्रीज ऊपर, 5 degrees north and 5 degrees south परे ही 5 degrees towards from 5 degree to the poles सेही डायरेक्शन रे गले 5 to 30 degrees रे हमको कोन हुए हमरो ट्रॉपिकल साइक्लोन मिले. 5 degrees तळे मिले. ओके, from 5 degree north to 5 degree south हमरो Coriolis force मिलेनी. That's why हमरो ट्रॉपिकल साइक्लोन मिलेनी, and that is the reason we need Coriolis force for our cyclones. Okay. So the next point is your wind shear. What is wind shear? Wind shear. So wind shear ta kono? Wind shear is the difference. Wind shear is the difference of the speed of the or the velocity of the wind across the altitude. For example, let's say eta. Let's say this is the surface level. Let's say this is the surface level. Okay, and this is your 1 kilometers from the surface. This is 3 kilometers from the surface. This is 5 kilometers from the surface. Okay, let's say, and this is 7 kilometers from the surface. Let's say 8 गोटे अल्टीट्यूड अछि हमर पाखरे. ओके, अबिका मते गोटे कथा कहंतु कि आमे जेतल साइक्लोन डेफिनेशन पढिथिले हम सेतल कोन पढिथिले कि साइक्लोन इज अ रोटेटिंग सिस्टम where the winds converge towards a central low pressure and spiral supports. ठीक अछि, spiral supports. तो हमर साइक्लोन टा गोटे एमते गोटे सिस्टम हे कि थाए पूरा. ओके, साइक्लोन एमते गोटे सिस्टम हे थाए. एटा धीरे धीरे जानिबे. ओके, साइक्लोन टा पूरा गोटे एमते सिस्टम हे कि थाए. ओके, जदि ए सिस्टम टा न रहिबो साइक्लोन फॉर्म होबन. जदि पूरा एटा गोटे एमते सिस्टम न रहिबो आउ ए जो सिस्टम टा पूरा आपनकर एक्सटेंड करे टिल ऑलमोस्ट टिल ट्रोपोस्फियर पाखा पाखी जे एटा एक्सटेंड करे. ओके, सो जदि एमते सिस्टम हमरो न फॉर्म होबो ताहले कोन होबो हमरो साइक्लोन फॉर्म होबनी. अबिका मते गोटे कथा कहंतु कि जदि लेट्स से एठी फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर पाखरे आम पाखरे विंड स्पीड अछि अराउंड 20 kilometers per hour. Let's say 3 kilometers पाखरे अछि लेट्स से अराउंड 60 kilometers per hour. 5 kilometers पाखरे अछि अराउंड 120 kilometers per hour. 7 kilometers पाखरे अछि 180 kilometers per hour. Okay, let's assume this. अबिका मते गोटे कथा कहंतु. Okay, so I'm making a cyclonic system here. I'm making a cyclonic system here. So do you think this system will sustain? Will this system sustain? No, sir.
इट विल नॉट सस्टेन ओके आ एटा वेरी क्लियर काहे कारण एटा 20 किलोमीटर्स पर आवर रे जतबळे हमर ग्राउंड ऊपर एटा मूव करथिबो त माने ई जो सिस्टम डा लेट से विंड टा एपडे ही मूव करछ लेट से तो ई जो सिस्टम डा ई पाखरे कोन होबो ये बहुत स्लो मूव करिवो टू इट्स राइट और लेट से एटा जदी वेस्ट वेस्ट ओके सॉरी दिस इज ईस्ट ईस्ट को जाउछ लेट से ओके तो टू इट्स ईस्ट ये बहुत स्लो मूव करिवो एट 20 किलोमीटर्स पर आवर किंतु एठी देखो ये केते स्पीड रे मूव करिवो ई पार्ट टा 120 किलोमीटर पर आवर माने ये जेतबळे लेट से let's say this is your A, this is B, this is C. Let's say A तमरो A टू एठी आसी पहुंची थिबो से टाइम रे C कोन ए पार्ट रु A डैश एठी पहुंची छि C कोन से टाइम रे आसी के एठी पहुंच जाइथिबो यस और नो तो एटा तो C एठी पळेबो तो ए जो सिस्टम टा साइक्लोनिक सिस्टम टा कोन हिजबो भांगी जिवो राइट सो साइक्लोन फॉर्म हेई परिबोनी तो हमर कोन दरकार विंड शियर सो दिस wind सेटा किछि नै बट the difference in wind the difference in the speed of wind with increase in altitude okay that is your wind shear तो एठी कोन होबो डिफरेंट altitude रे जति की wind रो स्पीड अछि तो एठी कोन होबो जति wind shear बहुत अधिका रहइला जो डिफरेंस बहुत अधिका रहइला ताहले कोन होबो हमर साइक्लिक सिस्टम भांगी जिवो सो हमर जो wind shear टा रहिबो इट शुड बी वेरी वीक ठीक अछि तो wind shear वीक वर्टिकल wind shear रहइबा दरकार ओके vertical wind shear टा जोटा रहइबा हमर सेटा बहुत वीक रहइबा दरकार so that the cyclonic system will sustain okay next point is your upper atmospheric divergence so what is this upper atmospheric divergence let's say this is your system okay and I said that this system is a low pressure system एठी गोटे low pressure हेची आ सेठी को wind आछी से wind कोन होउची low pressure को fill करि परनी आ से low pressure चारि पटे से wind टा बुलुची राइट से wind टा low pressure चारि पटे बुलुची अबिका गोटे कथा कहंतु जेतबळे ए wind टा आसी के एठी कोन होउची कन्वर्ज होउची जदी ए wind टा ऊपर को गला ओके ऊपर को गला आउ ए विंड टा ऊपर को जाई की जदी डाइवर्ज न हला लेट्स से विंड टा ऊपर को जाई की जदी डाइवर्ज न हला ताहले ए विंड टा कोन करबो ए जो सिस्टम कंटीन्यूअसली एठी को विंड आछी राइट कंटीन्यूअसली एठी को विंड आछी आ ए विंड टा ऊपर को जाई जदी डाइवर्ज न कला धीरे धीरे कोन होबे ए जो सिस्टम टा अछि एटा कोन हे जो फिल हे जिवो ए सिस्टम टा कोन हे जिवो फिल हे जिवो बाय द विंड ठीक अछि ए जो विंड टा एठी राइज करछि मे बी ए विंड टा कोन होबे एठी मे बी भाबो एपटे डाइवर्ज न हला आउ एपटे विंड टा डिसेंड करेला बहुत अधिका नॉर्मली भी विंड डिसेंड करे कारण सब विंड डाइवर्ज हुए किछि विंड फ्लो रे एपटे भी पळे आसे तो भाबो बहुत अधिका विंड आ भितरे ए सिस्टम भितरे पसिया स्टार्ट हे गला ताल कोन होबो ए सिस्टम टा जो लो प्रेशर अछि सेटा फिल हे जिवो से लो प्रेशर टा फिल हे जिवो आउ हमर जो लो प्रेशर टा दरकार साइक्लोन पे सेटा कोन होबो सेटा फिल हे की हमर सिस्टम टा भांगी जीवो सिस्टम विल ब्रेक यस और नो एटा बुझा हला समस्या को अपर एटमॉस्फेरिक डाइवर्जेंस काहे की दरकार ए पॉइंट बुझा हला समस्या Yes, sir. ओके Yes. ओके Sir, please repeat again. okay you want me to repeat okay see let's say this is your cyclonic system okay let's say this is your cyclonic system हमें जानि छे कि wind एठी आसी कोन होची कन्वर्ज होची आ ऊपर को राइज करची ओके जदी लेट्स से ए विंड टा ए सिस्टम भितरे पसिवा स्टार्ट हे गला ए विंड टा ऊपर को जाई कि लेट्स से ए सिस्टम भितरे ही पसिवा स्टार्ट हे गला एठी हमर कोन अछि लो प्रेशर अछि एठी हमर कोन अछि लो प्रेशर दरकार साइक्लोन पे लो प्रेशर दरकार किंतु लेट्स से ऊपर एठी डाइवर्ज न होई कि ए विंड गुडा एठी कोन ऊपर आसी कन्वर्ज हे कि आ भितरे ए सिस्टम भितरे एंटर करिया स्टार्ट करिवे
तो अधिका विंड आ भितर पशुचे राइट हमरो लो प्रेशर केतବେଳେ हबो लो प्रेशर सेतବେଳେ हबो जेतବେଳେ गोटे जागा रे जो एयर अछि से जागा छाडी की पळेबो लो प्रेशर केतବେଳେ हबो गोटे जागा रे जेतବେଳେ एयर अछि से एयर सेटू छाडी की पळेला से जागा तो से जागा रे हमर कोन हुए लो प्रेशर फॉर्म हुए आ हाई प्रेशर केतବେଳେ जेतବେଳେ से एरिया रे अधिका एयर आसिकी पहुंची जीवो सेतବେଳେ हमर कोन हुए हाई प्रेशर फॉर्म हुए एठी देखो कोन होउची जदी भाबो एठी उपरु आसिकी एयर एठी कन्वर्ज हेई गला ओके do you think this low pressure will continue to remain as a low pressure zone जी भी डाउट पचार थिले जदी ए एयर एठी आसी कन्वर्ज हेई जाउची तुमको लागुची कि एठी आसी कि ए लो प्रेशर जोन टा एठी सस्टेन करि पारिबोनी No, बिकॉज़ no, sir. दिस विल बिकम अ हाई प्रेशर एरिया अधिका जेतବେଳେ विंड जदी कन्वर्ज करि गला ए जगह रे कि ऊपर जाई कि डाइवर्स न करची एठी रहूची तो कंटीन्यूअसली जेतବେଳେ एयर एठी आसीबो तो एठी डाइवर्स न हबो ए एरिया रे से एयर टा कोन हबो फिल हेई कि रहि जिवो तो फुल हेई जेतବେଳେ रहि जिवो ए लो प्रेशर सिस्टम टा ही पळेबो ए लो प्रेशर सिस्टम टा और रहिबो तो दैट इज योर अपर एयर डाइवर्जेंस एटा बुझा हला समस्तंगो okay so that is what is written here the air currents needs to be pumped out okay and so that the low pressure is maintained at the center ठीक अछि एटा बुझा हला so the next point is your pre-existing low level disturbances in form of easterly waves okay एटा मु आपनकु टिके कहि दोछि जनरली कोन हुए हमरो ईस्ट लेट्स से 0 रु 30 डिग्रीज हमर कोन हुए हमरो ईस्टर्लीज फ्लो करे राइट ईस्टर्लीज फ्लो करे बट अंडर सम सर्कमस्टेंसेस ए ईस्टर्लीज टा कोन हुए एमती ईस्टर्ली वेव फॉर्म रे कन्वर्ट हे जाए ईस्टर्ली वेव टा कोन हुए वेव फॉर्म रे कन्वर्ट हे जाए ओके जेतले वेव फॉर्म रे कन्वर्ट हे जिवो अबिका को जो सब्सिक्वेंट विंड आसीबो एटा लेट्स से गोटे पार्सल ऑफ विंड अबिका जो सब्सिक्वेंट विंड आसीबो से विंड कोन हबो जेतो बेले एटा कोन हमर विंडवर्ड साइड जेतले ए विंडवर्ड साइड रे जेतो बेले आसी से विंड टा बाजिबो से विंड टा कोन हबो एठी राइज करिवो से विंड टा कोन हबो एठी राइज करिवो राइट एठी राइज करले कोन हबो एठी हमरो गोटे लो प्रेशर जोन फॉर्म हे जो काहे कि विंड टा ऊपर पळेला एठी कोन हबो हमरो लो प्रेशर जोन फॉर्म हबो राइट सिमिलरली जेतले ए पाखरे आसीबे एठी भी राइज करिवे तो एठी भी कोन हबो हमरो लो प्रेशर जोन फॉर्म हबो तो साइक्लोन फॉर्मेशन पाई आपनकर एमती बहुत छोट छोट लो प्री एक्जिस्टिंग लो प्रेशर जोन दरकार तो प्री एक्जिस्टिंग लो प्रेशर जोन हेले कोन हबो एतले विंड टा ऊपर को राइज करिवो एडी कोन हबो लो प्रेशर जोन फॉर्म हैला लो प्रेशर जोन जेतले फॉर्म हबो जेतले ई विंड टा राइज करिवो सेठी कोन हबो मु जो कहितले लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन तो लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन विंड टा राइज करले कंडेंस करिवो आ लैटेंट हीट प्रोड्यूस करिवो तो लैटेंट हीट जनरेट हला तापर कोन हबो ई लो प्रेशर टा पुनी इंटेंसिफाई हबो तापर आउरी विंड एठी के आसी जिवो तापर धीरे धीरे कोन हबो सेटा भी राइज करिवो आउरी इंटेंसिफाई हबो तो ग्रेजुअली ए जो लो प्रेशर सिस्टम टा बहुत बड़ा हबो जदी वी हैव अ प्री एक्जिस्टिंग लो प्रेशर जोन प्री एक्जिस्टिंग लो प्रेशर जोन अच्छी जदी इट विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द cyclone okay so this are some of the conditions preconditions that is required for cyclone formation of the cyclone okay so I guess etik samasung bujha hala so now let's discuss the formation of the tropical cyclone eta condition thila mu mate ja lagu je ebe ko samse bujhi sari bani ki kemti cyclone form hobo okay so amar kon हुए आमे जानले गोटे प्री एक्जिस्टिंग साइक्लोनिक प्री एक्जिस्टिंग वीक डिस्टर्बेंसेस आगुरु हमको दरकार तो लेट्स से प्री एक्जिस्टिंग वीक डिस्टर्बेंसेस अछि ओके सो दिस इज योर लो प्रेशर जोन जोटी आगुरु हमरो डिस्टर्बेंस अछि तो कोन होबो जेतो लो प्रेशर अछि एठी विंड कन्वर्ज करिया को ट्राई करिवो विंड कन्वर्ज करिया को ट्राई करिवो जेतोले एठी विंड आ कन्वर्ज करिवो कन्वर्ज करिया को आसीबो सेतोले कोन होबो एठी ए विंड कन्वर्ज करि पारिबोनी बिकॉज़ ऑफ ए लो प्रेशर जोन को फील करि पारिबोनी बिकॉज़ ऑफ आवर कोरियोलिस फोर्स ठीक अछि बिकॉज़ ऑफ आवर कोरियोलिस फोर्स फर्स्ट कोन ओडे लो प्रेशर जोन अछि सेठी हमर कोन होबो लो प्रेशर जोन रे ऑब्वियसली हम जानि छै एठी
कन्वेक्शन हबो ओके आउ जेतो कन्वेक्शन हबो कोन हबो एठी की आउ पाखरु जोडी हाई प्रेशर जोन दिबे सेटु आसी विंड कन्वर्ट करिया ट्राई करिवो ते कन्वर्ट करिया ट्राई करिवो सेतल कोन हबो कोरियलिस फोर्स विल नॉट लेट दिस विंड टू फिल दिस लो प्रेशर किंतु कोन करियो ता चारि पटे बुले दबो ओके तो एटा फिल हबनी तो एठी तापर कोन होची तो लो प्रेशर जोन रे ऊपर को विंड जाउची एठी लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन हमर प्रोड्यूस हबो आउ ए एरिया टा कोन हबो आउरी इंटेंसिफाई जो ए लो प्रेशर टा आउरी इंटेंसिफाई तो फर्दर आउ विंड एठी की अट्रैक्ट हबे तो से विंड भी कोन हबो ता चारि पटे बुलिबो आउ कंटीन्यूअसली ए विंड कोन हबो बुली की लो प्रेशर अछि तो कोन हबो विंड राइज करिवो राइट तो ए विंड कोन हबो बुली 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 ऊपर को गोटे स्पाइरल फॉर्म रे ए विंड ऊपर को राइज करिवो ओके ए विंड ऊपर को राइज करिवो एंड this is your formation of cyclone this is your formation of cyclone ठीक अछि बुझा हला गोटे लो प्रेशर जोन अछि से लो प्रेशर जोन रे कोन हबो विंड जेतले करंट राइज करछि ऑब्वियसली जेतले करंट ऊपर को जिवो आ कोन हबो सेठी हमरो कंडेंसेशन हबो कंडेंसेशन हेले लैटेंट हीट प्रोड्यूस हबो जेतले लैटेंट हीट प्रोड्यूस हबो से लो प्रेशर टा कोन हबो आउ इंटेंसिफाई हे जिवो आउ विंड सेठी के आसीबो आ कंटीन्यूअसली से विंड कोन हबे ऊपर को एमती हमरो स्पाइरल हेबे तो स्पाइरल हेबे तो गोटे पूरा सिस्टम एमती गोटे फॉर्म हे जिवो आउ से सिस्टम टाकू आमे कोन कहू साइक्लोनिक सिस्टम से सिस्टम टाकू आमे कोन कहू साइक्लोनिक सिस्टम ओके जस्ट a second okay so this is what you have in a notes formation of the tropical cyclone तो सेटा ही लिखा है under favorable conditions you will have multiple low pressure system okay multiple low pressure system रहिबो and the warm air is uplifted here and this releases latent heat and when this latent heat will release what it will do it will further uplift the air and this will intensify the low pressure system एठी कोन हला लो प्रेशर सिस्टम अछि विंड राइज करिवो माने करंट ऊपर को जीवो कन्वेक्शन थ्रू रे कोन हबो लैटेंट हीट रिलीज हेले कोन हबो फर्दर तमरो जो लो प्रेशर टा अछि सेटा इंटेंसिफाई हे जिवो आ लो प्रेशर टा आउरी अधिका इंटेंसिफाई हे जिवो लो प्रेशर सिस्टम ड्यू टू दिस the air from the surrounding region rushes in okay एथि पई कोन हबो एयर सराउंडिंग एरिया रु low pressure zone को आसीबो and it will be deflected by the Coriolis force and this will result in a cyclonic circulation एटा कोन हबो गोटे cyclonic circulation रे कन्वर्ट हे जिवो I guess mechanism और conditions बुझा गला Yes, sir. okay okay next let's discuss the characteristics okay let's discuss the characteristics of the cyclone the cyclone रे हमरो मझिरे गोटे फर्स्ट जो मु कहथि लो प्रेशर फॉर्म होबो आउ से लो प्रेशर कोन होबो विंड आसी की कन्वर्ट करिवो किंतु से विंड से लो प्रेशर को फिल करि परिवोनी आउ ता चारि पटे बुलिबा स्टार्ट करिवो राइट तो से जो मझिरे जो लो प्रेशर टा अछि जोटा पूरा गोटे काम रीजन सेटा को हमें कोन कहू सेटा को हमें आई कहू एटी जोटा आई लिखा हिची सेटा को हमें आई कहू ओके आई इज अ वेरी काम रीजन ओके वेयर वी हैव दिस लो प्रेशर ओके तापरे आईटा पूरा काम रीजन तो कोन वे आईटा मुझे जेमति कहितली जदी गोटे काम रीजन अछि लो प्रेशर अछि सेठी कोन होबो कन्वेक्शन होबो राइट कन्वेक्शन हेले कोन होबो से एरिया है ओके सेटा नेक्स्ट कहूची आउ आई रो बाउंड्री रे हमर कोन अछि आई वॉल दिस रीजन इज योर आई वॉल ओके दिस रीजन इज योर आई वॉल आउ आई वॉल रे आपनकर कोन होबो जो speed of the wind will be highest at the eye wall काहे कि wind टा पूरा बहुत फास्ट ए जाय आसी छि किंतु आउट साइड जाई परनी तापरे एठू बुलिया स्टार्ट हिची ओके
सो आउ एठी सबुटु अधिका लो प्रेशर एठी थाए आई रे थिबो राइट तो सेथि पई विंड टा कोन हबो सबुटु अधिका तार जो स्पीड एई आई वॉल रे थाए विंड रो स्पीड ओके सो एठी देखा जाउची एटा देखंतु एई एटा आई वॉल तो सेई आई वॉल रे तापरे एठी विंड आसी कोन हबो एटा तापरे स्पाइरल हबो ऊपर को स्पाइरल हबो आउ ए जो स्पाइरल होउची ऊपर को सेथि पई कोन हबो हमरो आउ एठी हमें जानि छे कि ए जो ऊपर को जो विंड दा स्पाइरल होउची सेथि रे हमरो मॉइस्चर अछि राइट से मॉइस्चर कंडेंस होउची कंडेंस हेले कोन हबो सेटा प्रेसिपिटेट हबो राइट माने प्रेसिपिटेशन हबो तो सेथि पई जे एटा बहुत जोरे बुलुची स्पाइरल होउची सेथि पई से जो प्रेसिपिटेशन दा हबो सेटा एम्ति नॉर्मली एम्ति तळकू पडिबोनी नॉर्मली तळकू पडिबोनी रादर एम्ति छिटकी की पडिबो एज रेन बैंक्स ओके सेटा कोन हबो एम्ति छिटकी की पडिबो ओके आउ एठी कोन हुए ऊपर को जाई की एयर टा डाइवर्स करे एठी ऊपर को जाई की एयर टा कोन हुए डाइवर्स करे आई वॉल रे एठी गोटे देखा जाउथबो सबसाइडिंग वार्म एयर किंतु पुनी गोटे जिंस मुंडे रे आस्थिबो कि जनरली एठी तो कोन हबो हमरो आई रे लो प्रेशर जोन अछि तो एठी तो विंड राइज करिया कथा तो एटा विंड काई सबसाइड करछि एठी विंड एथि पई सबसाइड करे एठी जो मु कहली कि आउटफ्लो हुए विंड ता तळे बाहर को आउटफ्लो हुए तो सबु विंड बाहर को आउटफ्लो हेई पारेनी किछि विंड कोन हुए जेतो बळे विंड ता बहुत जोरे स्प्रेड होउची बाहर को किछि विंड कोन हुए ए भीतर को पुनी पळे आसे ओके बट सेटा बहुत कम अमाउंट सेथि पई ए आई वॉल जगह रे आपनकर जो सबसाइडिंग वार्म एयर अछि तो सेथि पई कोन हुए एठी आपनकर जो आपनकर एटमॉस्फेयर एई जगह रे बहुत क्लियर थिबो माने आपन जो एटी ए आई वॉल रे जेतले आपन स्काई देखबे एई आई वॉल टा बहुत क्लियर थाए ओके एटी क्लियर स्काई देखा जाय तो आर गोटे इंपैक्ट होची जेतले साइक्लोन आसे जेतले साइक्लोन आसे तो कोन हुए फर्स्ट हमरो साइक्लोन आसले कोन हबो एई बाहर पार्ट टा जीवो जोडा पूरा डायमीटर ऑफ द साइक्लोन लेट्स से एटा 200 टू 500 मीटर्स किलोमीटर्स पाखा बाकी वेरी कर परियो तो कोन हबो लेट्स से दिस इज आवर कोस्ट तो फर्स्ट कोन हबो एई टिके छोटो हे गेला लेट्स से दिस इज आवर कोस्ट ठीक अछि तो फर्स्ट कोन हबो एई पार्ट टा आसी कि हिट करिवो लैंड रे लैंडफॉल जोडा हबो फर्स्ट एई पार्ट टा हिट करिवो तापर कोन हबो धीरे धीरे एई जो सब पार्ट धीरे धीरे ए पार्ट जाको आसी कि हिट करिवो तो आफ्टर लेट्स से this part reaches the coast let's say this part I wall this reaches the coast ठीक अछि तापर कोन हबो आई जो पार्ट टा अछि आई पार्ट टा धीरे धीरे कोन हबो आपनकर एबे लैंड ऊपर को आसीबो एतर आई पार्ट टा आसे सेतले कोन हुए आपनकर जो एटमॉस्फेयर हुए माने सेतले कोन हबो मु कहितले एटा पूरा काम रीजन काहे कि एठी पूरा विंड आसी परनी एरिया टा पूरा काम तो जेतले एई पार्ट टा आसे पूरा काम हे जाय ओके पूरा काम हे जाय आ लागे कि साइक्लोन पळेला आ साइक्लोन नाही क्लियर स्काइज भी थाए तो लागे कोन साइक्लोन पळेला किंतु तापर कोन हबो जेतो बळे एई पार्ट ऑफ द आई दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द आई दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द आई तळे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द आई कोस्ट रे हिट करिवो तापरे पुनी कोन हबो आई वॉल टा आसी कि कोस्ट रे पहुंच जिवो तो सेतो बळे कोन हबो अगेन द विंड स्पीड विल इंक्रीज आउ एई रीजन पई कोन हुए बहुत अधिका लॉस हुए लाइफ लॉस ऑफ लाइफ एति पई बहुत अधिका हुए माने कोन हुए जेतो बळे आई वॉल टा एटु पळेबो सेई टाइम में बहुत अधिका विंड फ्लो करियो विंड स्पीड बहुत अधिका थिबो लोक भीतर रहइबो कि जेतो आई वॉल टा आसीबो लोकन को लागे कि कोन साइक्लोन टा पळे लागो तापर लोक कोन करे बाहर पळे आसे तो बाहर पळे आसे तापर एई पार्ट ऑफ द आई wall the western part of the eastern part of the eye wall reaches the coast and that leads to huge loss of lives okay बुझाला ए पार्ट this is the first is the eye the cyclone creates a region of calmness at the center of the system that is called the eye wall the region surrounding the eye it is called the eye wall it is the most violent region and it experiences highest convection okay and has highest speed
ए दीटा पॉइंट समझ बुझा वाला यस Yes, sir. ओके तापर आउ एटा किछि किछि फैक्चुअल जिंस अछि सच एज द डायमीटर ऑफ द साइक्लोन कते हेतिबो जनरली इट वैरीज फ्रॉम 200 टू 500 किलोमीटर्स जो डायमीटर ए जो डायमीटर it varies from 200 to 500 kilometers and average speed of the cyclone is around 120 kilometer per hour. Average speed ta 120 kilometer per hour au apan jani chanti ki it can go up to 300 kilometers per hour also and more than that. Odisha experience karchi 99 रे. Okay. How जो cyclone अछि से cyclone रे हमें कोन जानछु एठी intense low pressure थाए जेतले intense low pressure थिबो एठी इंटेंस लो प्रेशर थाए तो इंटेंस लो प्रेशर थिबो सेठी कोन होबा आपनकर कन्वेक्शन बहुत अधिक हो कन्वेक्शन बहुत अधिक हो बहुत फास्ट कन्वेक्शन हो बहुत फास्ट कन्वेक्शन हेले कोन होबो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होबो ओके बहुत अधिक कन्वेक्शन होबो थंडरस्टॉर्म होबो आउ आपनकर कोन होबो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म हुए आउ टॉरेंशियल रेनफॉल हो बहुत अधिक रेनफॉल हुए आउ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हुए वी नो दैट इट आल्सो रिजल्ट्स इन फ्लड्स ओडिसा रे साइक्लोन हेले फ्लड भी हे जाय बहुत अधिका काहेकि कारण जो मॉइस्चर नहीं कि आसे साइक्लोन संगे बहुत अधिका मॉइस्चर धरी के आसे ओके आ कारण हमें जानि छे कि मॉइस्चर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द साइक्लोन राइट बिना मॉइस्चर रे साइक्लोन फॉर्म हे ही परिबन काहेकि हमें कोन जानले से जो मॉइस्चर टा जो हीट अधिका जो लैटेंट हीट जनरेट करछि ता पई हमर कोन होछि साइक्लोन टा और इंटेंसिफाई होछि ओके माने साइक्लोन लो प्रेशर टा इंटेंसिफाई होछि जोथि पई कि साइक्लोन फॉर्म होछि नले हे परिबन तो मॉइस्चर बहुत अधिका थाए आ जेतले लैंडफॉल करे सेतले कोन हुए ए मॉइस्चर रिलीज कर दे तो बहुत अधिका टॉरेंशियल रेनफॉल हुए and this is another characteristic that it develops over the ocean okay काहे कि लैंड ऊपर काहे हे परिबोनी एनीवन लैंड ऊपर ताको मॉइस्चर मिलगन यस लैंड ऊपर ताको मॉइस्चर मिलिबोनी सेति पई कोन होबा साइक्लोन आपनकर ओशन ऊपर या सी सरफेस ऊपर ही फॉर्म होबो माने ट्रॉपिकल साइक्लोन आपन ओशन और सी सरफेस ऊपर ही फॉर्म हे परिबो आउ आपन लैंड ऊपर फॉर्म हे परिबोनी and it generally moves from east to west okay it generally moves from east to west काहे कि एठी हमें सेटा भी म आपन कहितली कि जनरली साइक्लोन कोन केमती हमरो जो 0 to 30 सेट कोन हुए ईस्टर्लीज मूव करे राइट आउ हमें जानले कि ईस्टर्ली वेव फॉर्म हुए आउ ए डिस्टरबेंस रु हमरो साइक्लोन फॉर्म तो साइक्लोन से में जनरली it moves from your east to west then it tends to die when they fall on the land okay eta kahi ki cyclone why the cyclone dissipates as it fall on the land yes Source of cyclone moisture is not there. yes because the energy source of the cyclone what is the energy source of the cyclone energy source is the moisture okay it gets cut off from its moisture source that's why and another reason is the frictional losses jetole land upru pale asla building achi ମାନେ ଘର ବିଲ୍ଡିଂ ତାପରେ land ର जो फ्रिक्शन अछि माउंटेन्स एक्सेट्रा से सब रे बाजी की कोन होबो साइक्लोन धीरे धीरे डिसिपेट कर दिया साइक्लोन धीरे धीरे स्लो हो जाए ओके सो दैट इज अनदर characteristic of it is not a characteristic but you can write it ठीक अछि एटा खाली जानिया पई कि साइक्लोन जतो बळे लैंडफॉल करे सेतो बळे जेटा डिसिपेट कर जाए ओके सो this was your tropical cyclone we discussed about the conditions that is required and the atmospheric and its formation okay the condition that is required and the formation of the tropical cyclones then we discussed about the characteristics of the cyclone that eye achi eye wall achi etc okay so जदी आपनकर एग्जाम रे आसीबो you will write all this आउ जदी स्पेसिफाई करिवो कि इंडिया रे साइक्लोन विषय रे कहिया पई you will write all this and along with it just a second along with it what you can write is specific लिखिबे कि bay of
बेंगल रे बे ऑफ बेंगल रे कौन हुए जहाँ भी मैं लिखी थी जहाँ भी हमारे फैक्टर्स थी सेही जिनसटा आपण बे ऑफ बेंगल रे लिखिए कि बे ऑफ बेंगल रे या हुए कि सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रो अधिका थाए लो प्रेशर थाए सेति पई सेठी विंड कन्वर्ज हुए ओके सेठी कन्वर्ज होला पर कोन हुए एटा ईस्टर्लीज रे एम्बेडेड सेति पई कोन हुए जेतो बळे जस्ट अ सेकंड मैं एटा आरो पेज रे करछि एठी डिलीट करछि कारण आरो पेज रे कंटिन्यू फैक्टर्स कंटिन्यू है जस्ट अ सेकंड ओके ओके लेट्स से दिस इज इंडिया तो कौन हम बे ऑफ बेंगल रे आपन साइक्लोन जहाँ भी फैक्टर्स है सेम जिनस रहिबो सेटा सब आपन लिखिबे कि बे ऑफ बेंगल रे हला ओके आउ अराउंड आपनकर 10 टू 20 डिग्रीज भितर आपनकर ओरिजिन करे then it is embedded in the easterlies and it start moving towards India and it makes its landfall either in West Bengal majorly in West Bengal Odisha and Andhra coast majorly ei region re seta apanଙ୍କର landfall करे and sometimes कोन होय West Bengal पाखरे एटा recurve करिकी हमर कोन होय एटा पळाय towards Bangladesh sometimes it recurves and moves towards Bangladesh. Okay, in around 14 degrees to 16 degree पाखा पाखी ये कौन हुए latitude रे north latitude रे ये कौन हुए recurve करके बांग्लादेश पड़े and बाकी features you know the other features कि कौन destruction हुए कौन नहीं and अपन जो disaster management रे cyclone पढ़ा ही right तो सेथिरे will not get into that part ki kon loss हुए kon nahi because you have covered that in disaster management so you will write all those things along with it okay clear cyclone tropical cyclone something clear हला सर से जो मूव करछि ईस्ट टू वेस्ट से पॉइंट आउट रे कहि देबे कोडा माने एटा ना एटा नहीं सर ऊपर जो लिखा हितला कैरेक्टरिस्टिक रे okay just a second एटा moves from east to west एटा 7th Yes, point okay ଆମର cyclone ମୁଁ just ଆମର cyclone कोन हुए ट्रॉपिकल रीजन रे हमरो को विंड फ्लो करे 0 to 30 रे हमरो को विंड फ्लो करे ईस्टर्ली ट्रेड ईस्टर्लीज राइट अब हमरो जो साइक्लोन टा सेटा एम्बेडेड इन ईस्टर्लीज हमरो जो साइक्लोन टा मु कोन कहली कि ईस्टर्लीज मूव करू थाए बेले बेले ए ईस्टर्लीज कोन हुए ईस्टर्ली वेव फॉर्म रे कन्वर्ट हो जाए तो सेतो बेले जेतले ईस्टर्ली वेव फॉर्म रे कन्वर्ट हुए सेतो बेले कोन हुए एटी हल्का डिस्टरबेंस हुए मींस लो प्रेशर फॉर्म हुए काहे कि जो सब्सिक्वेंट विंड आसीबो एटी कम करियो से राइज कर जाए आउ एठो हमर साइक्लोन फॉर्म हुए आउ हम साइक्लोन दा ए ईस्टर्लीज रे ही एम्बेडेड ए ईस्टर्लीज रे ही एम्बेडेड दैट मींस ए जो ईस्टर्ली मूव करूची ए ईस्टर्ली ता संगे साइक्लोन को नै कि आसे ए जो ईस्टर्लीज ता संगे से कौन करे साइक्लोन को नहीं कि आसे तो सेथि पई हमर कोन हुए एटा लेट्स से इंडिया मेजरली साइक्लोन आसी कि साइक्लोन ईस्ट टू आसे टुवर्ड्स वेस्ट तो हमर अधिका कोन हुए ईस्टर्न कोस्ट रे अधिका कोन हुए ईस्टर्न कोस्ट रे लैंडफॉल हुए साइक्लोन अधिका जो साइक्लोन हुए हमर को ईस्टर्न कोस्ट रे काहे कि कारण ई 30 to 0 रे हमर ट्रॉपिकल रीजन रे ट्रेड ईस्टर्लीज फ्लो हुए किछि साइक्लोन्स हमर वेस्टर्न पार्ट रे भी आसे तारो रीजन माने अलग अलग रीजन अछि फॉर एग्जांपल किछि कोन हुए हमर जो 30 डिग्रीज अछि ओके जो साइक्लोन रो जो फॉर्मेशन हुए तारो डायमीटर ता बेले बेले कोन हुए हमर 30 डिग्रीज ऊपर पळाए आउ वेस्टर्लीज कोन करे ताकू फोर्स माने ता जो ईस्टर्लीज से जिबा जगह रे वेस्टर्लीज ताकू कोन करे डायरेक्ट कर दिए टुवर्ड्स वेस्ट आउ बेले बेले कोन हुए ठंडा दिन रे डिसेंबर मंथ रे कोन हुए जो वेस्टर्लीज अछि से कोन हुए टिके तळ को पळे आसे ओके सेथि पई भी कोन हुए सेटा पळे आसे टुवर्ड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट
जोड़ा हमरो वेस्टर्न कोस्ट जोड़ा आसी की पड़े आउ बाकी टाइम रे कोन हुए जेतो बेले लेट्स से जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कांसेप्ट अपन जानछन ओके से कांसेप्ट थ्रू रे भी बेले बेले जेतो लो प्रेशर एठी डेवलप हुए जदि भाबो एठी लैंड बहुत अधिक हीट हे जाईची आ एठी लो प्रेशर एठी हाई प्रेशर माने सॉरी एठी लैंड बहुत अधिक हीट हे जाईची माने लो प्रेशर अछि तो ए जो आउ एठी हमर कोन अछि हाई प्रेशर अछि ए रीजन रे जदि लेट्स से हमर हाई प्रेशर अछि जस्ट गोटे सेकंड रुहନ୍ତୁ भाबंतु लैंड रे हमर लो प्रेशर हे जाईची ठीक अछि त विंड ता केमते मूव करबो एमते मूव करबो आ भाबो एठी गोटे लो प्रेशर सिस्टम गोटे जनरेट हेची तो सेठी कोन हबो ई लो प्रेशर सिस्टम को ये कोन करबो ई जो विंड ता ता निज संगे नै कि लैंड आडू को मूव कर जाय तो सेठी पई कोन हुए बेले बेले हमर वेस्टर्न कोस्ट रे भी हमको साइक्लोन देखिया को मिले जोटा कि मूव करे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बट सेटा बहुत कम देखिया को मिले बेसी कोडी देखिया को मिले कारण ए जो कंडीशंस अछि ए कंडीशन बहुत कम फॉर्म हुए माने ए कंडीशन ता सब बेले फॉर्म हुए ओके ए जो कंडीशंस कहली एटा गोटे परमानेंट कंडीशंस नु एटा केतोळे केमती फॉर्म हस ठंडा दिन जदी वेस्टर्लीज पळे आसला अराउंड 30 डिग्री टू टिके तळु पळे आसला 20 डिग्री जडू पळे आसला सेतो बळे फॉर्म हेई परियो किंतु एठी जो ट्रॉपिक्स रे जो 0 रु 30 डिग्रीज जो 0 रु 30 डिग्रीज एठी कोन कंटीन्यूअसली ए कंडीशंस रहे माने कंटीन्यूअसली एठी ईस्टर्लीज फ्लो करू थाए कंटीन्यूअसली तो जेतो बळे हमरो साइक्लोन ता जेतो एठी जो लो प्रेशर ता फॉर्म होबो सेटा को कोन होबो ईस्टर्लीज ता संगे रे धरि की आसीबो आउ कोस्ट रे ए साइक्लोन ता को आसी कोस्ट रे लैंडफॉल करबो बुझा गला पॉइंट ता आज्ञा सर ओके सर हां सर 70 मीटर डेप्थ कले सर सेटा रीजन टा जानि हला कोटा कोटा बुझी पल्लेनी को सर पॉइंट 70 मीटर डेप्थ जो कहले फास्ट 70 मीटर 70 डेप्थ मीटर डेप्थ ओके 70 मीटर डेप्थ एटा भाबंतु एटा पानी जदि हमर भाबो डेप्थ बहुत अधिका नाही हमर डेप्थ बहुत अधिका नाही ताले कोन हबो जो सरफेस वाटर टा अछि सेटा कोन हबो तळ पानी संगे रे इजीली मिक्स हे जिवो यस और नो भाबो यस डेप्थ सर बहुत अधिका नाही तो सरफेस पानी टा तळ संगे बहुत अधिका मिक्स हे जिवो हमें कोन जानि छी कि हमकु बहुत अधिका हीट दरकार साइक्लोन पई हमकु कोन ट्रॉपिकल साइक्लोन पई हमकु कोन दरकार बहुत अधिका हीट दरकार जदि एबे ऊपर पानी ता तळ पानी संगे मिक्स हे गला इफ इट इज मिक्सिंग विथ द वाटर beneath it a lot ताले कोन हबो तळ पानी ता हम जानि छ कोन थाए कोल्ड थाए तळ पानी ता कोन थाए हमरो कोल्ड थाए जदि ये बहुत अधिका मिक्स करि जिवो ताले कोन हबो जो आर जो वार्मनेस और जो हीट ता रिड्यूस हे जिवो आर हीट ता रिड्यूस हे जिवो हीट ता रिड्यूस हे गले कोन हबो साइक्लोन फॉर्म होबा कष्ट हबो बुझा हला यस सर ओके ओके तो एटा गोटे छोटो टॉपिक खाली देखि दवा कि रीजन फॉर मोर साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी काहे कि बे ऑफ बंगाल रे अधिका साइक्लोन हुए रादर देन अरेबियन सी गोटे रीजन हला कि हमर जो बे ऑफ बंगाल रे जो टेम्परेचर थाए बे ऑफ बंगाल रे जो टेम्परेचर थाए सेटा टिके अधिका थाए देन अरेबियन सी अब हमें जानि छै कि टेम्परेचर इज वन ऑफ द मेजर कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ठीक अछि आउ गोटे कंडीशन हला कि बे ऑफ बंगाल रे रेनफॉल अधिका हुए ओके तो बे ऑफ बंगाल रे रेनफॉल अधिका हुए रेनफॉल अधिका हले कोन हबो कि जो सरफेस पानीटा अछि सेटा बेसी तळ संगे मिक्स होबनी रेनफॉल हले सरफेस पानीटा अधिका कोन हबो सरफेस रे रहइबो बेसी तळ संगे मिक्स होबनी ठीक अछि तो सेथि पई भी कोन हुए हमरो बे ऑफ बंगाल रे साइक्लोन होबार चांसेस बढ़ी जाय आउ गोटे जिंस रेमिनेंस ऑफ टाइफून्स फ्रॉम द साउथ चाइना सी ठीक अछि जोटा सॉरी फ्रॉम द पैसिफिक जो टाइफून इज आल्सो साइक्लोन ठीक अछि तार ना टाइफून अछि हमरो पैसिफिक माने साउथ चाइना सी रीजन है तको टाइफून कोंदी सेमती ऑस्ट्रेलिया रे साइक्लोन को विली कोंदी यूएसए रे माने नॉर्थ अमेरिका रे हरिकेन्स कोंदी एटा आपनकर दरकार पड़िबनी मेंस पे दरकार पड़िबनी सेति पे मु कहलिनी प्रीलिम्स हेतला हां ए सब दरकार पड़थांदा तो जो टाइफून्स थाए जो टाइफून्स फॉर्म हुए आपनकर पैसिफिक रे
से टाइफून्स कौन हुए पैसिफिक रु साउथ चाइना सी थ्रू रे बे ऑफ बेंगल को बेले बेले पळे आसे तो आमे जानि छी कि वीक डिस्टर्बेंसेस थिले कोन होबा हमर साइक्लोन फॉर्मेशन इजी हुए तो एई टाइफून दा वीक हे जाय थाए किंतु बे ऑफ बेंगल को इजीली पळे आसे तो बे ऑफ बेंगल को इजीली पळे आसे तो कोन हुए तो सेई वीक साइक्लोनिक स्टॉर्म टाकू वीक साइक्लोनिक स्टॉर्म टा स्ट्रांग साइक्लोनिक स्टॉर्म हे जाय और बे ऑफ बेंगल रे साइक्लोन फॉर्म हुए दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि काहे कि हमर बे ऑफ बेंगल रे होउची रादर देन अरेबियन सी अबिका म आपन गोटे छोट जिनसटे कहि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एग्जाम रे आपनकर बे ऑफ बेंगल अरेबियन सी दबन किंतु दबो कि काहे कि हमर लेट्स से बे ऑफ बेंगल देई देई छी ता संगे आपन को एमती भी देई दी छी कि साउथ चाइना सी रे ठीक अछि आउ गल्फ ऑफ मेक्सिको रे ठीक अछि कि कैरेबियन सी रे ठीक अछि ए रीजन रे काहे कि अधिका साइक्लोन फॉर्म होउची लेट्स से एमती देई दला आउ अलगा जगह रे एते होउनी ओके तो एबे मते कहंदु कि जदी आपण एई तीनटा पॉइंट जानि चंदी आपण बेसी पॉइंट एबे जे जानि नांदी ओके किंतु एई तीनटा पॉइंट जानि चंदी कि जदी कहइबो कि काहे कि आपणकर जो वेस्टर्न कोस्ट रे जो वाटर एरिया अछि कि सी एरिया अछि सॉरी ईस्टर्न कोस्ट जो वाटर एरिया अछि कि सी एरिया अछि सेठी काहे कि अधिका आपणकर साइक्लोन फॉर्म हबा हमें देखि परछु ठीक अछि तो आपण सेठी कोन करबे जदी भाबंतु आपण जानि नांदी पढी कि जाई नांदी किछि तो आपण कोन करबे एई भाबंतु एई पॉइंट को आपण सेठी भी यूज करबे even if you don't know I'm saying even if you don't know देखो हमर एठी एईटा नुहे कि आमे सेठी आमे जानिचे न जानिचे सेटा बेसी मैटर करनी आमे सेठी आंसर किछि लेखि के आसुचे कि नै इवन इफ वी डोंट नो मु कहितली कि बहुत थोर एमिति क्वेश्चन आसीबो जहार किछि भी आंसर आपण जानते किंतु हमको आंसर कोन करियो जनरेट करिया पड़ो इवन इफ यू डोंट नो आपण कोन लिखिबे कि सेठी बहुत अधिक हाई टेंपरेचर अछि ओके सेठी अधिक रेनफॉल अछि आ गोटे जिंस आपण कोन लिखि परिबे कि आपण जानि चंदी कि हमरो जो कोल्ड करेंट्स ओके कोल्ड करेंट्स हमरो कोल्ड करेंट्स अधिका को पटे थाए ओशन रे जो कोल्ड करेंट्स है सेटा को पटे अधिका फ्लो हुए सर वेस्टर्न साइड राइट तो आ गोटे पॉइंट कोन आपण लिखि परिबे सेठी कि वेस्टर्न साइड रे हमरो कोल्ड करेंट्स अछि वेस्टर्न साइड रे तो सेथि पई हमर कोन हुए वेस्टर्न साइड रे बेसी फॉर्म हुएनी वेस्टर्न साइड रे हमर कोन हुए कम फॉर्म हुए साइक्लोन्स कारण कोल्ड करंट अछि तो कोल्ड करंट हेले कोन हो वाटर टेंपरेचर कमी जिवो राइट तो आपण से जगह रे कोन करबे आपण किछि करबेनी से जगह रे जस्ट फैक्टर्स को भाबिबे एटा मु एई आंसर पई कहूनी एटा मु को भी आंसर पई कहूची आपण सेठी फैक्टर्स को भाबिबे कि मो पाखर कोन फैक्टर्स अछि ठीक अछि सेही फैक्टर्स को आपण सेठी मैनिपुलेट करबो ट्राई करिवे कि ड्यू टू दिस कि काहे कि लेट्स से काहे कि साउथ चाइना सी रे फॉर्म होची ओके बिकॉज़ सेठी हमें कोरिलेट सोर्स पाउछु बुझिपारले जेमति कहली साउथ चाइना सी रे काहे कि फॉर्म होची कि कैरेबियन सी रे काहे कि फॉर्म होची कि बे ऑफ बंगाल रे काहे कि फॉर्म होची बिकॉज़ हमें सेठी कोरिलेट सोर्स पाउछु राइट सेठी हमें अधिका वर्षा पाउछु राइट कोड वाला सेठी हमें कोल्ड करेंट्स पाउनु रादर हमें सेठी वार्म करेंट्स मिलुची हमगु राइट सो यू हैव टू जनरेट सच पॉइंट्स एंड राइट योर आंसर्स ओके क्लियर समझसंगु सो नेक्स्ट टॉपिक को जिता ट्रॉपिकल साइक्लोन यस सर ओके फाइन ओके तो जो हमर जो नेक्स्ट टॉपिक अछि सेटा हला that is your temperate cyclones किंतु टेम्परेट साइक्लोन आगुरु मु खाली जानियो चाहिबे कि आपण माने एयर मास कोन जानछन्ती व्हाट इज एयर मास Yes, sir. हां कोन
Sir, it's a large volume of air which has Okay, similar ଗୋଟେ second, characteristics. ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହିମାଂଶୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? हाँ sir. ଓକେ ହଁ ହିମାଂଶୁ କୁହନ୍ତୁ। Sir, air mass got a large volume of air ଯାହାର similar characteristics ଥାଏ in terms of temperature and ଓକେ moisture ଲ୍ୟାବ୍ସ content. ରେଟ୍ ବହୁତ କମ ଥିବ, ମଏଶ୍ଚର ସିମିଲାର ଥିବ, ମାନେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ତାଙ୍କର ସିମିଲାର ରହିଥିବ, ରାଇଟ୍? Yes sir. ଓକେ ତ ମୁଁ ଏୟାର ମାସ୍ ପଢେଇବିନି ବିକଜ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ, ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ ଦରକାର, ତ ତା ପାଇଁ ଏୟାର ମାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ସର୍ଟ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି କ'ଣ। ଆଇ ଗେସ୍ କି ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ ଏଟା ପଢେଇଥିବେ। ତ ଏୟାର ମାସ୍ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଆନ୍ extensive mass of air. Okay, it is an extensive mass of air which has similar moisture, temperature and very less lapse rate. Lapse rate माने जो रेट रे टेम्परेचर टा डिक्रीज हुए, माने लेट्स से एटा गोटे एयर पार्सल, लेट्स से दिस इज एन एयर पार्सल, तो एठी कोन हो कार ऑन अछि माइक प्लीज अनम्यूट कर म्यूट कर दे जस्ट अ सेकंड। साहिल कार अछि साहिल प्लीज म्यूट कर दियंतु। ओके एबे आपण ने निजे निजे अनम्यूट करि परिबे कि जेतला आंसर दबार हो? मु समस्त को म्यूट कर देछि, एबे निजे निजे अनम्यूट करि परिबे? Yes sir. ओके फाइन, Yes. ओके फाइन। ओके सो एटा लेट्स से गोटे एयर पार्सल, तो एठी कोन होबो, एठी जेतिक मॉइस्चर रहइबो एठी भी सेतिक मॉइस्चर रहइबो, सेतिक सेम, माने ए एरिया रे पूरा एयर पार्सल रे सेम मॉइस्चर रहइबो। जो टेम्परेचर चेंज भी होबो एठी बहुत कम टेम्परेचर चेंज होबा दरकार एयर मास रे, ठीक अछि, सो दैट गोटे सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रो एयर फॉर्म रहबो, सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से एयर पार्सल रो थिबो। ओके सो दिस इज योर एयर मास, ठीक अछि। किछि जदि भी आपण जानि नांती खाली एतिक जानंतु कि गोटे सिमिलर मास ऑफ एयर, गोटे सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रो मास ऑफ एयर गोटे रीजन रे थाए, सेटो को हमें एयर मास को। ओके नेक्स्ट फ्रंट जानि चंदी कोन, व्हाट इज फ्रंट? Yes, sir. यस कोन तो फ्रंट कोन? Sir, front is like the boundary of the air mass, where like the air mass ends and another air mass starts. Okay, front is a boundary between two contrasting air mass. Let's say this is a cold air mass and this is a warm air mass. So this boundary between the two air mass is known as front. ठीक अछि, हम एयर मास देखिले कोन, तो तापरे भाबंतु गोटे कोल्ड एयर मास अछि आ गोटे वार्म एयर मास अछि, ठीक अछि। एई दि जण मझी रे जो बाउंड्री टा फॉर्म हुए सेटो को हमें फ्रंट को। ओके सो जो कंट्रास्टिंग एयर मास जेतबेले गोटे बाउंड्री फॉर्म करंती हम सेटा को फ्रंट को। फ्रंट केते टाइप अछि? वार्म फ्रंट। ओके व्हाट इज एन वार्म फ्रंट? Okay, before that, just a second, I will tell you what is a stationary front. What is a stationary front?
The stationary front is like Hmm. I mean the temperature difference is not that much, so the movement is very minimum. Okay, so a stationary front is one where the warm air mass and cold air mass are stationary, nothing else. They एठी कौन होगा एठी देखो एटा हला गोटे cold air mass and this is an warm air mass. Okay, so they are stationary, that means they are positioned at their own place and they are not intruding into each other's place. Warm air mass cold air mass region को आसुनी कि cold air mass warm air mass region को जाऊनी. They are not intruding into each other's zone. They are maintaining their position at their own place. Okay. That is your stationary air mass. माने फॉर्म तो ही जाइछि, माने सने बाउंड्री तो फॉर्म कर दैछन्ती, किंतु कोल्ड एयर मास ता जागा रे रहिछि, वार्म एयर मास ता जागा रे रहिछि. They are not intruding into each other's zone. Okay, so that is your stationary air mass, stationary front. Sorry, stationary front. Okay, so next, warm front. What is a warm front? Anyone? Where warm air mass is aggressive towards the cold air mass. Okay, very good. When the warm air mass is aggressive and the cold air mass is stationary. Okay, cold air mass is less aggressive than the warm air mass. तो गोटे जिनस मत कहतु कि warm air, let's say गोटे एठी गोटे cold air mass अछि. This is a cold air mass and this is a warm air mass. A warm air mass. Okay. এই দুইটার হেভি কিয়ে, কোল্ড এয়ার মাস না ওয়ার্ম এয়ার মাস? হেভি কিয়ে থিব? কোল্ড এয়ার মাস, রাইট? কোল্ড এয়ার মাস ର ডেনସିଟି ଆମର ଅଧିକା, ওয়ার্ম এয়ার মাস লাইଟର থিବ. ତ ଯଦି ଆମେ ଭାବନ୍ତୁ କି କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ମାସ ୱାର୍ମ ଏୟାର ମାସ ଏ ଦିଟା ଏଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫର୍ମ କରିଦେଲେ, ଏଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫର୍ମ କରିଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି? ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ମାସ କଣ ହବ? ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଲା. ଓକେ, କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ମାସ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଲା. ଭାବ ଗୋଟେ 100 କେଜି ର ମଣିଷ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 30 କେଜି ର ଛୁଆଟେ ଅଛି. 30 କେଜି ର ଛୁଆ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି 100 କେଜି ପାଖକୁ ଆସି ବାଡେଇବା, କିନ୍ତୁ 100 କେଜି वाला ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, ଖାଲି ଟିକେ ହାତଟା ହଲେଇ ଦବ, 30 କେଜି କଣ ହବ? ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ. ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲୁନା ଆସୁଛି. ଲୁନା ପୁରା ଜୋରରେ ଉଡ଼ିକି ଆସି ଟ୍ରକ୍ ଉଡ଼େଇବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାଜିବ କଣ ହବ? ଲୁନା ଉଡ଼ିଯିବ, ରାଇଟ୍? ସିମିଲାରଲି ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ମ ଏୟାର ମାସ୍ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ମାସ୍ କୁ ଆପ୍ରୋଚ କରିବା ଆଗ୍ରେସିଭଲି, ଓକେ, ୱାର୍ମ ଏୟାର ମାସ୍ ଯେତେବେଳେ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ମାସ୍ କୁ ଆପ୍ରୋଚ କରିବ ଆଗ୍ରେସିଭଲି, ତ କଣ ହବ? କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ମାସ୍ ର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା, ତ ୱାର୍ମ ଏୟାର ମାସ୍ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ମାସ୍ କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ପାରିବ କି? Will the warm air mass be able to lift the cold air mass? No, sir. No. So what it will do? Aggressive एक आसिला, किंतु कौन होबो? सिए धीरे 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 कोल्ड एयर मास ऊपर को राइज करियो. ओके, से धीरे धीरे कोल्ड एयर मास ऊपर को राइज करियो. जेतळे से धीरे धीरे कोल्ड एयर मास ऊपर को राइज करियो, तो एठी कौन होबो? आपण जदी रेनफॉल पढ़िथिबे, रेनफॉल रे गोटे आपणकर कन्वेक्टिव टाइप थाए. कन्वेक्टिव टाइप रेनफॉल, कन्वेक्टिव टाइप रेनफॉल रे कोन होबे कि आपणकर बहुत अधिका कन्वेक्शन होबो. जे जोटा हम साइक्लोन रे पड़ले बहुत अधिका कन्वेक्शन होबो, सडनली क्युमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होबो आउ बहुत अधिका वर्षा, राइट? किंतु आउ गोटे टाइप रो थाए रेनफॉल, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल. ओरोग्राफिक रेनफॉल रे कोन होबे? विंड आसे, इट माउंटेन रे ऑब्स्ट्रक्ट हुए एंड दिस विंड राइजेस ग्रेजुअली. ये ग्रेजुअली राइज करियो माउंटेन ऊपर को, राइट? एठी कोन? एठी सडन राइज होउची, काई बहुत अधिका एनर्जी तळु ऊपर को जाउची, तो ये सडनली राइज होउची और क्युमुलोनिम्बस क्लाउड है कि हेवी डाउनफॉर होउची. एठी किंतु कोन होबे? एटा धीरे धीरे राइज करियो. जेतले धीरे धीरे एयर राइज करची, एठी कोन होबो? क्लाउड्स फॉर्म होबो धीरे धीरे. माने आपणकर क्युमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होबनी, रादर स्ट्रैटस क्लाउड
फॉर्म हबो आ जो वर्षाटा हबो सेटा कोन ड्रिजल हबो ड्रिजल मींस हल्का हल्का वर्षा जो वर्षाटा भल लागे राइट सेही वर्षाटा हबो ड्रिजल हबो सिमिलरली एटा भी आपण देखंतु ए जो वार्म एयर मासटा धीरे धीरे कोल्ड एयर मास ऊपर को चढ़ुची it is similar to that of convective type of rainfall or to orographic type of rainfall orographic type of rainfall तो जेतबेले वार्म एयर मास ता धीरे धीरे कोल्ड एयर मास ऊपर जीवो सेतबेले कोन हो एटी हल्का हल्का वर्षा हो ड्रिजल हो राइट एटा हमर दरकार नै मु खाली आपन आगो जिंसटा बुझाई बेली एटा टिके कहूची ओके एटा हेला हमर वार्म फ्रंट देन कोन कोल्ड फ्रंट रे कोन हो कोल्ड फ्रंट रे कोन हो will be aggressive cold air mass will be aggressive let's say this is your cold air mass this is your warm air mass ठीक अछि तो जति कोल्ड एयर मास एग्रेसिव थिबो सेटा को हम कोल्ड फ्रंट कहबा ओके आ कोल्ड एयर मास जेतला एग्रेसिव थिबो से कोन करिवो सी वार्म एयर मास को संगे संगे ऊपर को अपलिफ्ट कर दबो काहे कि सी डेंसर सी तो जीवो से पूरा वार्म एयर मास काट दबो मजिरु आ ताको ऊपर को अपलिफ्ट कर दबो ठीक है जतले ऊपर को अपलिफ्ट करिवो ए जो अपलिफ्टटा कोन सडन अपलिफ्ट हो ए जो अपलिफ्टटा कोन हो इट विल बी सडनली अपलिफ्टेड जेमती हमर कन्वेक्टिव टाइप ऑफ रेनफॉल होतला सेमती एटी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म हे जो आ वर्षाटा जो हबो सेटा बहुत हेवी डाउनपोर हबो ओके एटा बुझा गला समझसंगु दिस इज योर स्टेशनरी फ्रंट एटा आपनकर स्टेशनरी फ्रंट ठीक अछि केई भी एग्रेसिव नमे दी जन जको आसी के एठी बाउंड्री बनै की बसचंदी दी जन देखु चंदी दी जनकर पावर कि का पखरे अधिका बळ अछि जो लोक अधिका खाली सामना सामने ठिया की गपु थांदी कि मु तते मार देबी मु तते बाडी देबी किंतु किछ करू न थांदी राइट तो एटा सेही जोन तापरे नेक्स्ट योर वार्म फ्रंट ठीक अछि वार्म फ्रंट एटा कोल्ड फ्रंट हां तो एटा दिस इज योर वार्म फ्रंट रे कोन हबो वार्म एयर इज एग्रेसिव then warm air is rising above the cold air ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର this is warm front ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର drizzle ହବ ତା ଉପରଟା ଦେଖନ୍ତୁ this is your cold front ରେ କଣ ହବ cold air is aggressive here ओके जते cold air aggressive होला से कोन करियो warm air को ऊपर संगे संगे अपलिफ्ट कर दबो ଆଉ एठी ଆପଣଙ୍କର convection type rainfall हबो ଆଉ गोटे टाइप रो फ्रंट थाए that is your occluded front this is your occluded front kono occluded front is a situation where the cold air mass completely uplifts the warm air mass from the ground level एट देखंतु cold air mass आछि राइट आउ ये एग्रेसिव अछि आ कंप्लीटली एठी कोन करछि warm air mass को ऊपर को अपलिफ्ट कर देछि ठीक अछि ग्राउंड रे आउ टच हे कि नाही warm air mass so this situation is known as your occluded front okay this is your occluded front ठीक अछि आई गेस एति की समस्या बुझा हला ओके नेक्स्ट जो टॉपिक हमर थिला मु कोन कहथि दैट इज आवर टेम्परेट साइक्लोन्स राइट टेम्परेट साइक्लोन्स तो टेम्परेट साइक्लोन्स जो फॉर्म हुए इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस एयर मासेस टेम्परेट साइक्लोन जो फॉर्म हुए इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस एयर मासेस तो एटा को रीजन रे फॉर्म हुए एटा जनरली आपनकर फॉर्म हुए इन मिड लैटिट्यूड्स फ्रॉम अराउंड 40 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज लैटिट्यूड ठीक अछि ए एरिया रे को विंड फ्लो हुए एनीवन लेट्स से दिस इज योर अर्थ एटा आपनकर इक्वेटर वेस्टर्लीज यस दिस इज योर 30 डिग्री दिस इज योर 60 डिग्रीज ठीक अछि ए एरिया रे हमरो आमे जानछे दिस इज योर ट्रेड ईस्टर्लीज दिस इज योर वेस्टर्लीज एठी हमरो पोलर ईस्टर्लीज राइट तो हमर जो वार्म फ्रंट जो हमर टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म हुए मु कोन कहै एटा फ्रंटल राइट एटा फ्रंटल तो फ्रंटल माने कोन दीटा अपोजिंग एयर मास कन्वर्ज करंदी दीटा अपोजिंग एयर मास कन्वर्ज करंदी राइट सो this is your westerlies
This is your westerlies, this is your warm air, and this is your polar easterlies. This is your polar easterlies, and this is your cold air mass. Cold air, right? तो एठी जो वार्म एयर एठू जाउची और एठी जो कोल्ड एयर जाउची, दे आर कंट्रास्टिंग एयर मासेस, राइट? दे आर कंट्रास्टिंग एयर मासेस. तो ये जो कंट्रास्टिंग एयर मास एठी से माने कोन करंदी, ए रीजन रे से माने कोन करिवे, फ्रंट फॉर्म करिवे, फ्रंट फॉर्म करंदी. ठीक अछि? तो ई जगह एटा को कोन कोंदी, पोलर फ्रंट, पोलर फ्रंट. ओके, एठी से कोन करन, फ्रंट फॉर्म करंदी. आ हमें एटा भी जानि छे कि हमर जो प्रेशर बेल्ट्स अछि, जो प्रेशर बेल्ट्स अछि, प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट कांस्टेंट. Okay, they are not constant or fixed. They move, they tend to move from one place to other place, right? And shift करंदी, they tend to shift. Pressure belt tends to shift from one place to other place. तो एठी कोन हुए, जेतरे बहुत अधिका ठंडा हबो, लेट्स से डिसेंबर मंथ, तो ये जो कोल्ड एयर मास कोन हबो, ये आउट के भीतर को इंट्रूड कर दियो. ठीक अछि? प्रेशर बेल्ट टिके तळ को पळेबे, कोल्ड एयर मास आउट के भीतर को इंट्रूड कर जाय. तो सेथि पई कोन हुए, आपनकर 40 डिग्रीज रीजन रे भी हमरो बेले बेले कोन हुए, ए जो पोलर फ्रंट 40 डिग्रीज रीजन रे भी आपन फॉर्म हुए. तो 40 रु 60 भितरे, 40 डिग्रीज रु 60 भितरे हमरो पोलर फ्रंट फॉर्म हुए. ठीक अछि? पोलर फ्रंट फॉर्म हुए दीटा कंट्रास्टिंग एयर मासेस पई. ओके, सो ए जो दीटा कंट्रास्टिंग एयर मासेस अछि, से माने तांको पई कोन हुए, गोटे साइक्लोनिक, तांको पई कोन हुए, गोटे साइक्लोनिक circulation रे. सेटा हमें बे ई डायग्राम रु बुझिबा. Okay, we'll understand that from this diagram. So see here, this is your first part. Okay, before that, just see this. Temperate cyclones, they are formed in the mid latitude. Okay, and they correlate to polar front and warm westerlies. I mean, जोटा बे कथा है. Okay, oh sorry, means correlate to polar front, माने जो polar front हम अपन कहले सेटा फॉर्म हुए, and they are formed by warm westerlies and cold polar winds. Cold polar winds और warm westerlies polar front form करंदी, and that leads to your temperate cyclones, and it is explained through a, means this temperate cyclone will be explained by me now by the polar front theory. Polar front theory रे आपनकर 6टा स्टेज को आइछि. ओके, 6 स्टेजेस को आइछि जोथरे कि हमरो टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म हुए. ठीक अछि? जोथरे कि हमरो टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म हुए. So the first stage, this stage, it is known as your frontogenesis. ए जो स्टेज ता एटो को हम कोन को frontogenesis. Genesis means formation, right? Genesis माने formation, आउ frontogenesis means formation of the front. तो एटा कोन होबो, अराउंड 40 to 60 डिग्रीज रे. ठीक अछि? वार्म एयर आउ कोल्ड एयर एटा कोन करिवे, से माने दे विल कम एंड फॉर्म अ फ्रंट. ए जगह रे सन कोन करिवे, गोटे फ्रंट फॉर्म करिवे 40 to 60 डिग्रीज रे. एपडो कोल्ड एयर आछि फ्रॉम द नॉर्थ, फ्रॉम द पोल्स, आउ फ्रॉम 30 डिग्रीज वार्म एयर जाउछि, और से माने कोन करिवे, एठी गोटे फ्रंट फॉर्म करिवे. आउ ए फ्रंट ता को टाइप रो फ्रंट, देखि कि कोन लागुछि, को टाइप रो फ्रंट एटा. एटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रु आछि, एटा हमरो सदर्न हेमिस्फीयर रु आछि. सॉरी, एटा हमरो 90 रु 60 रु फ्रॉम, जस्ट अ सेकंड, एटा हमरो नॉर्थ रु आछि, और एटा हमरो साउथ रु आछि. साउथ मींस फ्रॉम 30 to 60 डिग्रीज, और एटा हमरो 90 to 60 रु आछि. ओके, सो एटा को टाइप रो फ्रंट, फर्स्ट ता देखि कोन लागुछि. दिस इज अ स्टेशनरी फ्रंट. स्टेशनरी फ्रंट काहे कि, कारण वार्म एयर ता जगह रे अछि, वार्म एयर ता जगह रे अछि, कोल्ड एयर ता निजे जगह रे अछि. दे आर नॉट पुशिंग ईच अदर इनटू ईच अदर्स, दे आर नॉट इंट्रूडिंग इनटू ईच अदर्स एरिया. एटी सेना आसी कि स्टेबल है कि एटी ठिया आइछंदी. दिस इज कॉल्ड फ्रंटोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट. ओके, द सेकंड स्टेज. ओके, द सेकंड स्टेज, in this stage what happens, the cold front tries to ए स्टेज रे कोन हो, गोटे वेव फॉर्म हबा स्टार्ट हुए. काहे कि ए जो कोल्ड एयर अछि, इट ट्राइज टू इंट्रूड इनटू द वार्म एयर रीजन. इट ट्राइज टू इंट्रूड इनटू द
वार्म एयर रीजन ओके एंड सिमिलरली एठी जेतले मु आपनको पढोइथिली जेतले आपनको मु कहूथिली वार्म एयर कोन होबो जेतले लेट्स से कोल्ड एयर एग्रेसिव अछि तो सेतले कोन होबो वार्म एयर कोन होबो धीरे धीरे कोन करिवो कोल्ड एयर ऊपर राइज करिवो राइट तो सिमिलरली एठी कोन होबो वार्म एयर आपनकर लोअर लैटिट्यूड्स को आसे पे सॉरी कोल्ड एयर आपनकर कोन करिवो लोअर लैटिट्यूड्स को आसे पे ट्राई करिवो सो इट विल पुश द वार्म एयर so at that time what will happen the warm air will try to move towards the cold air region ठीक अछि से कोन करियो कोल्ड एयर रीजन को ट्राई करियो मूव करिया पई ओके आ धीरे धीरे वार्म एयर कोन करिवो जेमती एठी मु कहितली जेतल कोल्ड एयर आसीबो वार्म एयर कोन करिवो कोल्ड एयर ऊपर को राइज करिवो सेठी हो कि एठी हो जा भी हो तो कोल्ड एयर जेतबेले आसीबो वार्म एयर रीजन को वार्म एयर कोन करिवो धीरे धीरे कोल्ड एयर ऊपर को राइज करिवो जेतले धीरे धीरे राइज करिवो से कोन करिवो ग्राउंड रू धीरे धीरे कोल्ड एयर विल स्टार्ट मूविंग टू द अपर एटमॉस्फेरिक लेवल ठीक अछि एठी जेतले कोल्ड एयर आपन को इंक्लूड करियो वार्म एयर रीजन को वार्म एयर धीरे धीरे कोन करिवो इट विल स्टार्ट मूविंग above the cold air ठीक अछि and in this stage you will see the formation of a cyclonic wave eta देखो first la frontogenesis where there is convergence of contrasting air mass second है the division of stable front माने stable front divide होगा start होची and a wave like front is formed okay now आपर कोन होबो थर्ड स्टेज रे जेतो बळे मुठी कहली वार्म एयर टा कोन करबो वार्म एयर टा धीरे धीरे राइज जस्ट अ सेकंड जेतो वार्म एयर टा धीरे धीरे राइज करबो आपनकर कोल्ड एयर ऊपर को एबे कोन होबो एई रीजन रे कोन होउची लो प्रेशर फॉर्म होउची काहे कि एठी जो एयर टा थिला से कोन होउची से ऊपर को पळौची एठी जो एयर टा थिला से कोन होउची ऊपर को पळौची तो ऊपर को पळौची ए जगह रे कोन होउची लो प्रेशर फॉर्म होउची एठी एयर नाही लो प्रेशर फॉर्म होउची तो कोन होबो कोल्ड एयर सडनली ट्राई करिवो कि ए जगह को मूव करिया पे जेतोले एठी वार्म एयर ऊपर को राइज करि गला कोल्ड एयर सडनली कोन करिवो ट्राई करिवो ए रीजन को मूव करिया पे बिकॉज़ ऑफ द क्रिएशन ऑफ अ लो प्रेशर एयर तापर जेतोबेले लो प्रेशर ई जेतोबेले कोल्ड एयर ए जगह को ट्राई करियो मूव करिया सडनली कोन होबो हमें जानि छे कि जो कोरियोलिस फोर्स is directly proportional to the speed of the wind right तो जेतोबेले ये सडनली मूव करियो ट्राई करिवो कोरियोलिस फोर्स कोन करियो बहुत अधिक एक्ट करिवो कोल्ड एयर ऊपर तापर कोल्ड एयर कोन करिवो ई जगह रे मूव सर्कुलर मोशन रे मूव करिया पई माने कर्वेचर दे दबो कोरियोलिस फोर्स आ कोल्ड एयर ई जगह रे सर्कुलर मोशन रे फ्लो करिवा स्टार्ट करिवो सी दिस इज व्हाट इज शोन इन द थर्ड स्टेज दैट इज अ मैच्योर स्टेज एठी कोन हला एठी जस्ट वेव फॉर्म हेतला किंतु एठी कोल्ड एयर कोन हलानी जेतले वार्म एयर धीरे धीरे कोल्ड एयर ऊपर को राइज कला कोल्ड एयर सडनली एबे वार्म एयर रीजन को मूव करूची तो सडनली मूव करूची से कोन हला कर्वेचर फॉर्म हला कोरियोलिस फोर्स में एंड इट इज स्टार्टिंग टू force the warm air to move upwards it is trying to force the warm air to move upwards and it is pushing the warm air to its left right ebe dekhontu fourth stage this is the quick shift of the warm air this stage is known as eta hala mature stage and the fourth stage is your quick shift of the warm air ebe kon hoje cold air बहुत forcibly काहे कि कर्वेचर आसला तो से बहुत फोर्सिवली एबे सर्कुलर मोशन रे स्टार्ट हला तो सर्कुलर मोशन रे से मूव करूची से कोन करची वार्म एयर को बहुत फोर्स रे पुश करूची तो वार्म एयर एबे कोन होबो धीरे धीरे राइज करिवो कोल्ड एयर ऊपर को एंड ग्रेजुअली दिस कोल्ड एयर विल स्टार्ट क्लोजिंग दिस वार्म सेक्टर एयर ए जो वार्म एयर रो जो सेक्टर टा अछि कोल्ड एयर कोन करिवो आकु धीरे धीरे एठी पुश करिकी एठू मूव करिया को ट्राई करेगो so here the cold air will start moving in a circular manner leading to a cyclonic circulation finally कोन होबो एठी ग्राउंड लेवल रे आमे जोटा ओक्लूडेड फ्रंट पढिथिले ठीक अछि एठी देखन ग्राउंड लेवल रे कोन होबो कोल्ड एयर पूरा ग्राउंड लेवल टा को ऑक्युपाई कर दबो कोल्ड एयर पूरा ग्राउंड लेवल को ऑक्युपाई करिवो आउ जो सर्कुलर मोशन पूरा एठी स्टार्ट होबो आउ वार्म एयर पूरा माने सर्कुलर मोशन तो एठी स्टार्ट हेई जाइतला एठी पूरा कोल्ड एयर कोन करिवो ग्राउंड लेवल रे ऑक्युपाई कर दबो ग्राउंड लेवल को आ वार्म एयर पूरा ऊपर को पळेबो
ठीक अछि वार्म एयर पूरा ऊपर पळेबो एंड दिस इज योर ऑक्लूजन स्टेट एबे कोल्ड एयर पूरा ग्राउंड को पळे आसला एबे जतरा कोल्ड एयर पूरा वार्म एयर एरिया को पळे आसला आ वार्म एयर ऊपर पळेला एबे कोन हबो एबे जो साइक्लोन ता फॉर्म हेइथिला एबे धीरे धीरे से साइक्लोन ता डिसएपिएट करिवो और धीरे धीरे से साइक्लोन ता एबे कोन हबो बंद हबो व्हाई बिकॉज़ नाउ देयर इज नो कंट्रास्टिंग एयर मासेस ई जो कंट्रास्टिंग एयर मासेस थिला सेति पे कोन होतला ये लो प्रेशर होतला अब सेठी की वार्म एयर मूव करिया स्टार्ट करतला लो प्रेशर होतला वार्म एयर धीरे धीरे ऊपर जाउतला लो प्रेशर फॉर्म होतला कोल्ड एयर से जगह आसी ताको आउरी फर्दर पुश करतला किंतु फाइनली कोन हो वार्म एयर जो पूरा राइज कर जिवो आउ सेतोले आउ किछि लो प्रेशर नथिबो कारण सेठी कोल्ड एयर पूरा से जगह नै जाइथिबो एंड दिस ऑक्लूजन स्टेट स्टार्ट्स द बिगिनिंग of the end of the cyclone. Okay, here the cyclone starts reducing, the cyclonic circulation starts reducing, and again see the last stage, this is the frontolysis. कोन एटी फ्रंट जो फॉर्म हेतिला से फ्रंट टा पूरा सरी गला and this stage is known as your frontolysis stage. आउ एटी कोन हबो पुनी वेदर टा स्टेबल हे जिवो. Okay, just let's see what is there in the notes. First stage frontogenesis, convergence of contrasting air masses. ठीक अछि दीटा contrasting air mass converge करछुंदी. Then division of the stable front. कोन हला जोटा हम सेकंड स्टेज पढ़ले कि हल्का वेव लाइक फ्रंट हला the cold air is pushing towards the lower latitudes and is trying to intrude into the warm region. Then is your mature stage. Mature stage रे कोन होउची the cyclone is fully developed काहे कि एबे cold air move करिया स्टार्ट कलानी सेतले जस्ट पुश करूतला एटी जस्ट पुश करूतला एटी किंतु मूव करिया स्टार्ट कलानी the cold polar air mass intrudes the lower latitudes and pushes the warm air to its left. तो warm air को से कोन करछि एबे लेफ्ट को पुश करछि. Then the quick shift of the cold front, that means cold air जो cold air mass अछि एबे बहुत एग्रेसिव हे जाइछि and the warm air mass loses the ground contact and marches over the cold air mass. धीरे धीरे it will lose the ground contact. Last stage is stage of occlusion, not last stage, the second last stage of occlusion. Cold air mass completely occupies the geographical expanse and warm air mass is pushed up completely say geographical expanse nela, and this marks the beginning of the frontal decay. जो front टा बनितला एडी कोन हला decay होबा start होला. And the last stage is the frontolysis. The fronts get destroyed and the cyclone dies off. Okay, 8 छटा स्टेज बुझा गला polar front theory. Everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So this is your temperate cyclone, and जदि temperate cyclone आसीबो डायरेक्ट cyclone कोन लिखि देबे. ठीक अछि जदि लिखिबे कि दुई टाइप रो साइक्लोन अछि, वन इज योर थर्मल एंड अदर इज योर फ्रंटल साइक्लोन. आ फ्रंटल साइक्लोन को हमें टेम्परेट साइक्लोन कहू. तापरे आपण पोलर फ्रंट थ्योरी ना दे कि ई छटा स्टेज लिखि देबे जतले ई छटा स्टेज कंप्लीट कर देबे. ओके, देन द आंसर विल बी कंप्लीट. आउ कैरेक्टरिस्टिक्स कोन फ्रंटल साइक्लोन रो साइज बहुत बड़. आ साइज हमरो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन रे हम पढ़ले कि इट इज अराउंड फ्रॉम 200 to 500 किलोमीटर्स राइट. ताठो अधिका भी हेई पारे माने बहुत अधिका होबनी 1000 रे जाई पारे, बट जनरली इट इज फ्रॉम 200 to 500 ट्रॉपिकल साइक्लोन रे. किंतु आर साइज इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 500 to 2500 किलोमीटर्स. ठीक अछि 500 to 2500 किलोमीटर बहुत अधिका. मु कोन कहितली एयर मास ता गोटे लार्ज एक्सटेंसिव मास. एबे भाबंदु कि पूरा हमरो पूरा ई रीजन रे हमरो दीटा कंट्रास्टिंग एयर मास मिली परिबो. पूरा ई रीजन रे हमरो कंट्रास्टिंग एयर मास मिली परिबो. ठीक अछि सेति पई एयर मास रो जो हमरो टेम्परेट साइक्लोन रो साइज भी बहुत बड़ होय. ओके, एंड हाइट इज अराउंड 6 to 11 किलोमीटर्स. स्पीड हमरो जनरली जो मु कोन कहतली थर्मल ओरिजिन हमरो ट्रॉपिकल साइक्लोन थर्मल ओरिजिन सेटा तारो वेलोसिटी बहुत अधिका थाए. से साइक्लोन बहुत अधिका डिस्ट्रक्टिव काहे कि जो एनर्जी अछि मॉइस्चर बहुत अधिका एनर्जी मिले, किंतु एठी सेमिति किछि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ से भले किछि एनर्जी नाही. हेंस द स्पीड इज नॉट मच बट अराउंड 50 to 150 किलोमीटर्स. ओके, आउ एठी कोन होबे लाइट टू हेवी डाउनपोर.
लाइट टू हेवी डाउनपोर जेतबेले वार्म एयर धीरे धीरे राइज करथुव कोल्ड एयर मास ऊपर सेतबेले कोन हबो लाइट रेनफॉल हबो किंतु जेतबेले हम पढले क्विक शिफ्ट ऑफ एयर क्विक शिफ्ट ऑफ वार्म सेक्टर जोटा फोर्थ स्टेज हमर कोल्ड एयर मास सेतबेले कोन होता बहुत स्ट्रांग हे जाउतला आ वार्म एयर मास को अपलिफ्ट कर दोतला at that point seteବେଳେ कोन हबो you will get heavy downpour. Okay, so these are some of the characteristics of the temperate cyclone. एबे मु कहिबिनी आपण माने एई आंसर टा एबे कहिबे मते if आसीबो कि to write the difference okay difference between temperate and tropical cyclones. Difference between temperate and tropical cyclones. ठीक है Anyone? कुहंतु कौन हे परियो डिफरेंस बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन एबे जहा पढेली फीचर जो ताकर फैक्टर्स कंडीशंस से सबु भाबी की मते कुहंतु ट्रॉपिकल साइक्लोन टा ट्रॉपिक्स एरिया रे हुए टेम्परेचर हायर लैटिट्यूड रे हुए ओके वेरी गुड हमर टेम्परेट साइक्लोन टा हायर लैटिट्यूड रे हबो फ्रॉम अराउंड 40 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ट्रॉपिकल टा हमर ट्रॉपिक्स रे हबो फ्रॉम अराउंड 5 डिग्रीज टू from around 5 degrees to 30 degrees latitude. Okay, how can point हे परियो ट्रॉपिकल साइक्लोन टा ओवर वाटर माने क्रिएट हुए और टेम्परेचर लैंड मास रे भी परबो. ओके वेरी गुड ट्रॉपिक टा आपनकर ओके मु एटा टिके तळे लिखुची कारण ऊपर आउ गोटे पॉइंट जोटा कि बहुत सिंपल पॉइंट सेटा लिखिबी सर टेम्परेचर ट्रॉपिकल टा अछि टेम्परेचर डिपेंडेंट और आरोटा अछि एयर मास डिपेंडेंट. ओके वेरी गुड टेम्परेट साइक्लोन टा हला फ्रंटल इन नेचर अपन लिखि परियो एयर मास एटा हला टेम्परेचर डिपेंडेंट और थर्मल एटा को डायनामिक भी लिखि परियो. ओके से पॉइंट हम लिखिबा आगु को आपण कोन कहितले पॉइंट टा बोली को पॉइंट कहितले आपण आगुरु ओके ओरिजिन कि एटा खाली ओशन ऊपर कि सी सरफेस ऊपर ओरिजिन हे परिबो और सेटा लैंड और सी दीटा को प्रभावित. ओके वी विल कम टू दैट पॉइंट. आउ कोन हे परियो ओके से पॉइंट टाइप लिख दोची थर्ड पॉइंट ए दीटा फर्स्ट पॉइंट हिसाब रे ठीक रहबो सेटा थर्ड पॉइंट लिखि दोची कि जो टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिन both over land and water body. किंतु हमरो ट्रॉपिकल साइक्लोन रो ओरिजिन ओनली ओवर वाटर बॉडी. Okay, what else? The area-wise temperate cyclone is a very widespread. It covers around like 2,000 kilometers, and the impact is less devastating as compared to tropical cyclone, which is confined to like 400 to 500 kilometer radius, but it is associated with heavy rainfall and devastation. Okay, fine. So, एटा दीटा पॉइंट रे हम लिख परिया गोटे हला कि तांकर डायमीटर और एरिया दैट दे कवर. ओके डायमीटर आपनकर डायमीटर केते एठी 500 टू 2500 किलोमीटर्स सेम एठी
200 to 500 आगु जाई पर एटा एवरेज 200 to 500 kilometers. Okay, next point that we can write is, just a second, next point that we can write is this is the velocity. सेटा को जोटा लेस डिवास्टेटिंग कहले सेटा को वेलोसिटी रे हम करिक लिखि दवा. ओके, वेलोसिटी आरो केते रहइबो अराउंड फ्रॉम 50 टू अराउंड 150 किलोमीटर्स रहइबो. 50 किलोमीटर पर आवर टू अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर, राइट. आ आरो केते रहइबो, इट विल बी एवरेज, आरा एवरेज वेलोसिटी रहइबो अराउंड 120 kilometers, 120 kilometers, and it can go up to 300 kilometers also, right. So hence this will be less devastating. High destruction. Okay, what else? The land sea point हाँ सेटा लिख दीजिए. Okay, what else? So tropical cyclone टा east to west move करिबा, temperate Yes. to west to east. Yes, very good. एपटे हम टेम्परेट अछि तो एपटे हमर एटा moves from east to west. Just a second. It moves from that moves from east to west, and this from west to east. West to east, and the tropical cyclone, it will move from east to west. Okay, what else? I think direction the time were same रहेगा ना, northern hemisphere southern hemisphere. नहीं सेटा एटा नहीं, एटा जो मूवमेंट को आउची एटा सर्कुलर मोशन रो मूवमेंट को आउनी. सर्कुलर मोशन डायरेक्शन सेम रहइबो कि आपनकर एंटी क्लॉकवाइज दीटा को एंटी क्लॉकवाइज हेबे. एटा मूवमेंट को आउची जो साइक्लोनिक सिस्टम टा माने एटा जो गोटे सेकंड एई जो मूवमेंट टा एटा दी जनकर सेम रहइबो. ठीक अछि, जो बुलुची किंतु ए जो सिस्टम टा ट्रैवल करिवो. माने भाबंतु जोटा हम एटा कथा हेतले एटा इंडिया भाबंतु, एटा भाबंतु इंडिया. तो ये जो मूव करिवो टू द कोस्ट, एटा कोठु मूव करछि, ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करछि, राइट. ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करछि किंतु एटा कुआडे मूव करिवो, एटा वेस्ट टू ईस्ट मूव करिवो. कारण एटा जो रीजन रे अछि से रीजन हम कोन वेस्टर्लीज देखिया को पाउछे, राइट. तो एटा कोन होबो वेस्ट टू ईस्ट मूव करिवो. सर किछि साइक्लोन जोटा अरेबियन सी रे जनरेट होंदे सेगुडा सी गुजरात कोस्ट रे भी. हां यस यस यस. आपण स्टार्टिंग रो थिले क्लास रे? नहीं सर. से एटा हम डिस्कस करिथिलु कि काहे कि किछि साइक्लोन आसी कि हमर वेस्टर्न कोस्ट रे आसी कि हिट होछंदी. जनरली हमर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन अछि सेटा कोन होवे, ईस्टर्न कोस्ट रे हिट होवे जनरली. आउ जनरली हमर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन अछि सेटा ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करे. किंतु किछि रीजन पे जेमति मु कहिथिली कि विंटर टाइम रे कोन होवे, हमर वेस्टर्लीज सी इंक्लूड कर जानती टिके भितर को, आउ कोन करंती जो विंड था ताको डिफ्लेक्ट कर दियंती. आउ अलगा टाइम रे लैंड आउ सी डिफरेंशियल टेंपरेचर डिफरेंशियल पाई भी बेले बेले कोन हुए हमर वेस्टर्न साइड रे हमर ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट करे. ओके, सो सेटा सब बेले हुए नहीं, जनरली सेटा एक्सेप्शन. जनरल जोटा हुए सेटा हमर ईस्ट टू वेस्ट हुए. ठीक अछि. ओके सर. ओके, आउ गोटे जिंस कि एठी हमर कोन हुए, stratus clouds and light rainfall. It can also lead to cumulonimbus clouds. Okay, but you will write that the temperate cyclones are also associated with stratus clouds, but tropical cyclones, they are never associated with, tropical cyclones are never associated with stratus clouds. सब बेले cumulonimbus clouds रे associate होंदी.
Okay, this can also be associated with cumulonimbus clouds, but they will also have stratus clouds. But in tropical cyclones, you will never have stratus clouds. Okay, so that was all for cyclones. Au ame disaster management रे आपण केमती mitigate करियो कोन करे सेटा पढिछे. Okay, so this is all about cyclones. So एठी हमरो हम क्लाइमेट रे कोन पढले, क्लाइमेट रे मेनली इंडिया रे पढियार अछि. तो इंडिया रे मेनली ई दीटा जिंस गोटे हला आपनकर मॉनसून, गोटे हला आपनकर साइक्लोन, ई दीटा जिंस. आ गोटे जिंस वेजिटेशन. ओके, वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन. आर मु आपनको आज हैंड आउट देबी. ओके, कारण एथिरे बेसी किछि एक्सप्लेन करियार नाही. ठीक अछि, आर मु आज आपनको हैंड आउट देबी वेजिटेशन रो. तो सेही हैंड आउट रो पढि देबे, दैट विल बी एनफ फॉर क्लाइमेट. ठीक अछि, विथ दैट वी एंड द क्लाइमेट पार्ट. ठीक अछि, आउ मेनली दीटा पार्ट रहला. आउ गोटे पार्ट जेमति फॉर एग्जांपल सॉइल. ओके, सॉइल आपनकर मेंस रे सेमिति बेसी किछि क्वेश्चंस आसेनी सॉइल. ओके, बट स्टिल आउ आपण प्रीलिम्स रे सॉइल पढिथिबे. आउ ताटु बेसी किछि डिफरेंस नाही सॉइल रो. ओके, प्रीलिम्स रे सॉइल आपण पढिथिबे, ताटु बेसी किछि डिफरेंस नाही. बट स्टिल व्हाट आई विल डू, आई विल आल्सो गिव अ हैंड आउट फॉर सॉइल, बट आई विल से दैट you can avoid that. You should give it less preference. ठीक अछि, कारण सॉइल रो मेंस रे बेसी किछि क्वेश्चन बनिबोनी, आउ बेसी किछि क्वेश्चन आसीबोनी. सॉइल रे जहा क्वेश्चन साने प्री रे पचारिबे क्वेश्चन. तो मु कहबी कि एई हैंड आउट को आपण न पढले भी चलिबो. ओके, मु देई देबी कि न पढले चलिबो, किंतु एईटा को पढि देबो, वेजिटेशन हैंड आउट को पढि देबो. ठीक अछि. नेक्स्ट हमरो मेनली जा रहिला. हां, तापरे आउ कोन ज्योग्राफी रो अछि हमरो सोशल सर ज्योग्राफी. ह्यूमन जोग्राफी तो बहुत मन पचारछि ओपीएससी. Okay, we'll do that. Social geography. Okay, social geography रे आपनकर फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, ये सब जिंस कवर होबा कथा. ओके, एंड सौरभ सर हैज कवर दिस पार्ट इन सोसाइटी, राइट. मु सौरभ सर संगे कथा होतली एई पार्ट विषय रे. So he said that he has covered this parts, organization, population, e jo सब part social geography ro. So this is same to what you are reading in society. एथरे बेसिक किछि अलगा पढियार नै. population रे कोन प्रॉब्लम अछि, ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, जो पिरामिड्स, राइट. ए सब जिंस आपनकर सोशल ज्योग्राफी रे मु पढाई थांदी, बट इट इज कवर्ड इन सोसाइटी. सो आई विल नॉट टेक दिस पार्ट. तापरे नेक्स्ट जिंसटा, जस्ट अ सेकंड, गोटे हला हमरो जियोफिजिकल फेनोमेनन and specifically OPSC has mentioned that you have to read cyclones, earthquakes, volcanism and tsunami. ई चारटा अछि, हम इटा कवर कर दै छै. टुमारो विल बी डूइंग दिस पार्ट. ओके, earthquake, volcanism and tsunami. आउ गोटे पार्ट रहला आपनकर इकोनॉमिक ज्योग्राफी. इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी आपन सोशल इकोनॉमिक सोशल पार्टटा सेथिरे कवर होबो. आउ ओडिसा ज्योग्राफी तो जेतोले आपनकर ओडिसा ज्योग्राफी चलिबो सेथिरे कवर होबो, ओडिसा रिलेटेड. इंडिया कथा कहतली जोटा सोसाइटी रे आपन पढले सेटा. इकोनॉमिक ज्योग्राफी रे दीटा पार्ट. गोटे पार्ट हला एग्रीकल्चर, आउ गोटे पार्ट हला इंडस्ट्रीज. ओके, एग्रीकल्चर पार्टटा आपनकर मैम एग्रीकल्चर नौचंदी माने नैचंदी, and she has covered this, so I am not going to touch this part. But what I will do, I will discuss with you the industry part. Okay, this part I will be discussing with you. Okay, so आपनकर भी क्लियर हला माने टोटल सिलेबस रे आपन कोन कवर करिया दरकार, कोन कोन अलगा क्लास रे ओवरलैप हेची, जोटा हेची आ कोनटा हेइनी, जोटा कि मु आपन को कहिबी. जेमति कि एई पार्टटा गोटे, इंडस्ट्री गोटे,
এই দুইটা পার্ট আজি আমি ইন্ডাস্ট্রিটা করিবা কালি আমি এই পার্টটা করিবা এন্ড along with it also I will be taking this tribal in Odisha tribal people in Odisha সেই পার্টটা भी ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନେବି ଓକେ ସो ଆଜି ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ କରିବା କାଲି ଏଇ ପାର୍ଟଟା କରିବା ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି କାଲି ଯେତେ ବି ଟାଇମ ଲାଗିବ ଆଇ ୱିଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦିସ୍ ଯଦି ବି ନ ସରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେଶୀ ଟାଇମ ର ନୁହେଁ ଛୋଟ କ୍ଲାସ ନେବି ସେଇ କ୍ଲାସରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ବି ଥିବ ସେଟା ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବନିଗଲା କି କଣ ଦରକାର ଅଛି ରାଇଟ୍ ଓକେ ବୁଝାଗଲା Yes, sir. Okay so now we'll be discussing this industries part just a second সেটা এথিরে কন্টিনিউ করনি এটা okay just a second okay ଏବେ screen visible ଅଛି yes No, sir. screen visible नहीं okay just No. a second सर शेयर कर लो अच्छा sorry okay ଏବେ visible ଅଛି Yes, sir. okay fine actually आरो जो pdf टा बनेई पठौदिली सेति पई मु स्क्रीन टा बंद करथिली okay so now we'll be discussing about industries तो इंडस्ट्रीज रे मेनली हमें दीटा जिंस डिस्कस करी ठीक अछि गोटे जिंस हला कि द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज गोटे सेटा डिस्कस करिवा आउ जोटा सेकंड जिंस डिस्कस करिवा that will be the industrial regions of India okay so we'll be discussing this mainly we'll be discussing this two parts in industries that is the first will be why some industries are located in some regions and the second will be what are the okay the first will be the factors that results in location of industries and the second is the India industrial complexes ए दुईटा जिंस हमें mainly discuss करिया ठीक अछि so can anyone tell me what are the factors that lead to location of industries or affect the location of the industries yes raw Solar material availability
ओके फर्स्ट हला आपण कहले रॉ मटेरियल ओके फाइन Human resources. human Transportation. resources what else okay human resources Communication facility. okay Transport. transportation okay fine transport facilities सेटा सेइतरे हमर communication भी सेटा ही गला transport facilities what else Market. okay market Availability of electricity. electricity okay very good Raw material. electricity टा एटा energy भी आपण नहीं करिवे what else raw material हे जाईची आउ कोन Capital. capital okay fine capital आउ कोन गोटे बहुत कॉमन जिंस छाडुछन्ती आपण माने Sir, Land. land resources. land resources ओके land availability सेटा भी लिखि परिया कैपिटल रे पळेबो कैपिटल रे land भी पळेबो ठीक अछि मु land आउथर लिखि दोछि ओके Sir, political stability. ओके ता आगुर आगुटे जिंस लिखि दोछि जोटा कि कोर टू द इंडस्ट्री वाटर अवेलेबिलिटी ओके एटा गोटे बहुत बड़ जिंस इंडस्ट्री लोकेशन पे ना आपण बे राजस्थान रे जाई कि वेस्टर्न राजस्थान रे जाई कि इंडस्ट्री बेसी पाइबेनी ठीक अछि ता रीजन हला कि वाटर अवेलेबिलिटी नाही मार्केट भी सेठी नथिबो किंतु एटा गोटे बहुत बड़ जिंस ठीक अछि फॉर एग्जांपल बेसी कोथरे माने मेटलर्जी इंडस्ट्रीज रे जोटी कि बहुत वॉशिंग वगैरह बहुत अधिक दरकार पड़े लेदर इंडस्ट्री रे सेठी दरकार पड़ियो हां आ कोन कहितले बे Political stability. yes political stability okay fine ठीक अछि so these are some of the factors okay that is required how factors hela Sir, biodiversity factor ही परियो. biodiversity exactly हबोनी माने बायोडायवर्सिटी रो कोर रीजन फॉर एग्जांपल आपण कहबे कि हां जोडी बहुत अधिक बायोडायवर्सिटी अछि सेठी इंडस्ट्री करिया देबेनी सेटा अलगा हिंस ठीक अछि किंतु सेटा गोटे कोर फैक्टर नुए इंडस्ट्री रो लोकेशन रो आ गोटे जिंस हे परिबो सेटा लागि क्लाइमेटिक फैक्टर्स ठीक अछि क्लाइमेटिक फैक्टर माने जियोग्राफिकल फैक्टर्स जदी आपण एटा को एमती नेबे लेट्स से यू विल टेक इट एज अ just a second let's say you will take it as a core geographical factor okay as a core खाली geographical factor लिखिबे ताले एथरे गोटे आपनकर क्लाइमेट पळेबो आ गोटे आपन एथरे कोन पळेबो टोपोग्राफी और रिलीफ जोटा आपन एठी लैंड भी कहले सेथरे भी आसी पारे ओके टोपोग्राफी और रिलीफ ठीक अछि ए रीजन ए जिंस भी इंपैक्ट करिवो काहाकू हमर इंडस्ट्रियल लोकेशन को ओके फाइन सो लेट्स सी गोटे गोटे करके देखिबा कि केमती ए फैक्टर्स इंपैक्ट करिवो ओके okay so let's go first with the most important factor that is raw material okay that is a raw material can you tell me how raw material impacts the location of industry anyone yes Sir, raw material ଗୋଟେ type ର industry ହଉଛି weight reducing industries ତ okay ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ raw materials use ହୁଏ ସେଟା heavy ଥାଏ ତ ତାର okay transportation costly ରହେ ଯଦି ଆମେ raw material ଯୋଉଠି available ଅଛି ଆଉ ତାଠୁ ଆମେ ଦୂରରେ ଯଦି industry setup କରୁଛେ ତ okay industries ମାନେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଯୋଉଠି raw material ମିଳେ ତ ସେଇ okay ପାଖାପାଖି ହିଁ ମାନେ setup ହେଇଥାଏ for example iron and steel industries are set up near coal mines or iron ore mines. okay बुझले okay very good so हमर जो raw material अछि सेटा मेनली तीन प्रकार था ओके गोटे रॉ मटेरियल थिबो दैट इज एज यू सेड वेट लूजिंग
वेट लूजिंग ओके वेट लूजिंग रॉ मटेरियल कौन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल जी की जदि इंडस्ट्री रे प्रोसेसिंग हे गला लेट्स से यू हैव completed the processing this raw material will lose its weight for example let's say you are giving an input of 100 kg of iron and 100 kg of coal let's say okay hypothetically it's a thing that you are giving 100 kg of iron and 100 kg of coal एटा काहे की दोचो एटा स्टील बनाय पे दोचो राइट तो एथुर केते बाहरिबो जस्ट 10 kg of steel ठीक अछि तो एठी कोन हला प्रोसेसिंग रे जो पसिला सेटा 100 kg of coal पसिला 100 kg of iron पसिला किंतु जोटा बाहरला हमर फाइनल फिनिश गुड दैट इज जस्ट ऑफ 10 kg ओके सो दिस इज अ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल जे की प्रोसेस करे तारो वेट लूज कर जाय देन द सेकंड इज योर weight gaining raw material okay weight gaining raw material एटा आपण एबे जानि परथबे कोन होतिबो एठी जो raw material अछि से कोन करे आफ्टर प्रोसेसिंग ये कोन करिवो weight gain कर दियो this will gain weight for example bakery industry okay बेकरी इंडस्ट्री में कौन हुए लेट्स से आपण 1 kg ऑफ व्हीट यूज कले आ 1 kg ऑफ सुगर यूज कले ठीक अछि माने जेमती हम ब्रेड जोडा बने ठीक अछि अपन तो आपण एटा यूज करी की बनौ छंदी सेथरो 2 kg बाहरी बन कारण एठी कोन होबो से बहुत वाटर कंज्यूम करंदी ठीक अछि आउरी बहुत प्रोसेसिंग अछि गोटे एग्जांपल एटा बेकरी इंडस्ट्री एठी केते बाहरी फॉर एग्जांपल लेट्स से एठी हमरो 4 kg of फिनिश गुड बाहरियो एठी हमर जो फिनिश गुड आसीबो सेटा कोन हो 4 kg आउ गोटे जोटा अछि दैट इज योर फुटलूज इंडस्ट्रीज कोन ये सेमते इंडस्ट्री जे की एमते किछि रॉ मटेरियल यूज करे दैट नाइदर गेन्स वेट नॉर loses weight neither gains nor loses weight ठीक अछि फॉर एग्जांपल कॉटन सेठी ना से गेन करंदी कॉटन इंडस्ट्री ना लूज कर सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री ठीक अछि ए तीनटा बुझा वाला वेट लूजिंग वेट गेनिंग एंड हमर फुट लूज ए तीनटा बुझा वाला ना समझ यस ओके सो ओके तो एबे कोन होबो मते गोटे कथा कहंदो कि लेट्स से मु एबे गोटे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मते बसेर अछि गोटे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बसेर अछि ओके अबे के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मते बसेर अछि लेट्स से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मु जानि छि कि ओडिसा रे हमरो लेट्स से आमे जानि छि कि हमरो ए रीजन रे छोटनागपुर प्लेटू रीजन रे हम पाखरे कोल आउ आयरन भलो मिलु छी ओके किंतु मु कोन करछि मोर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को नेकी जम्मू कश्मीर रे बसउ छी ठीक अछि जम्मू कश्मीर रे बसउ छी तो एबे मते लाभ होबो कि क्षति होबो विल आई गेन और लूज एब्सोल्युटली लॉस राइट काहे की कारण मो रॉ मटेरियल एठी अछि आ मु जे कि जे एंड के रे बसउ छी ओके लेट्स से मते लेट्स से ओके कि जे एंड के रे किंतु मते कोन मिलु छी व्हीट आ सुगर बहुत इजीली मिल जाउ छी ठीक अछि मते व्हीट एंड सुगर बहुत इजीली मिल जाउ छी तो मु कोन गली व्हीट एंड सुगर मते तो जे एंड के रे मिल जाउ छी हां फॉर बोथ फॉर कोल एंड हां मु एठी गोटे कथा कहदे कोल आयरन पे लेट्स से हमरो एटा डेवलप्ड रीजन
ठीक अछि ए रीजन हमर डेवलप रीजन गुजरात महाराष्ट्र एक्सेट्रा मार्केट हमर एठी अछि म थरे कहूची मार्केट हमर गुजरात महाराष्ट्र वेस्टर्न कोस्ट रीजन रे अछि कोल आयरन एठी मिलुची जम्मू काश्मीर व्हीट सुगर मिलुची मु जम्मू काश्मीर रे जाई दीटा इंडस्ट्री बसौची गोटे कोल आयरन बसौची गोटे व्हीट सुगर बसौची ठीक अछि तो कोल आयरन पई आपण माने कहले कि मोर लॉस हे जिवो मते कोन व्हीट सुगर पई लॉस हबो कि गेन हबो माने बेकरी इंडस्ट्री पई एठी गेन हबो ना लॉस हबो सर लॉस हो सर काई कि लॉस हबो तो सेठी मार्केट अवेलेबल नहीं यस तो मार्केट अवेलेबल नाही तो कोन हला फॉर एग्जांपल लेट्स से मु एठी मार्केट रे जदी थांती लेट्स से मु Sir, एठी it's बसे a weight gain industry. So the cost of transporting the finished good is more. yes that's what I wanted to tell you so Weber जदि हम ना पकेबे ठीक अछि ना पकेबे भी जीएस रे किछि सेंती प्रॉब्लम नै किंतु वेबर कोन करथले सीए इंडस्ट्री लोकेशनल फैक्टर्स देथिले locational factors of industry and he mainly based it on transportation cost ठीक अछि वेबर हमर इंडस्ट्री लोकेशन फैक्टर देथिले एंड मेनली बेस्ड इट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रे से कोन करले लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेथड रखले तो से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर बेस करिले तांकर लोकेशन से कोन करले लेट्स से दिस इज a triangle here you are getting iron here you are getting coal this is your raw material 1 this is your raw material 2 and this is your market okay this is your market ठीक अछि तो से कहले कि जेतो बळे हमरो एठी आयरन मु कोन कहितली लेट्स से आयरन रो वेट हला लेट्स से 2 कोल रो वेट हला लेट्स से 2 ओके हम जानी छे कि आंकर जो फिनिश गुड मार्केट को जीवो लेट्स से दैट इज 1 ओके जो फिनिश गुड मार्केट को जीवो लेट्स से दैट इज 1 माने ए दीटा 4 केजी मार्केट को सेन केते देबे 1 केजी ओके तो इट जो आयरन टा अछि लेट्स से वी आर ट्रांसपोर्टिंग दिस आयरन टू द मार्केट and let's say the transportation cost is 100 rupees per kg तो एठी कोन हेगला 200 rupees एठी कोन हेगला हमरो 200 rupees राइट तो 400 टंका आपण देई की 400 rupees आपनकर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ला ई दीटा जिंस को मार्केट नै की जीबा पे ओके बट लेट्स से आपण कोन करथिले ई दीटा को मार्केट न बसेकी ए दीटा को आपण मार्केट न बसेकी आपण कोन करले एठी कोडी गोटे बसै देले ठीक अछि एठी कोडी गोटे बसै देले ठीक अछि एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज अराउंड दिस इज 0.5 एठी कोन हला एठी बसै देले तो एठी की हमक लेट्स से द कॉस्ट एठी हम 200 पड़थला ठीक अछि कारण ए डिस्टेंस रा अधिका 200 पड़थला लेट्स से एठी हमर डिस्टेंस रा कोन हो 50 पड़ला एठी हम डिस्टेंस रे भी हमको 50 पड़ला ए जगह रे ठीक अछि एठी हम गोटे इंडस्ट्री बसैले जोटा की मझिया मझी थिला तो डिस्टेंस ता हमर 50 50 पड़ला एठी केते हला हमर 100 रुपीस पड़ला ठीक अछि 100 रुपीस पड़ला एठी आउ एठू हमको मार्केट नबार अछि एठी एबे हम पदर कोन अछि टोटल गोटे केजी ही जिंस अछि सेतोल केते था 4 केजी जिंस थिला एठी गोटे केजी जिंस अछि तो ए गोटे केजी को हम एबे मार्केट पे ट्रांसपोर्ट करिया तो कोन हबो हम केते पड़िबो रुपीस 100 ओके रुपीस 100 तो एठी गोटे 100 लागितला एठी गोटे 100 लागिला टोटल हमर केते लागिला रुपीस 200 ठीक अछि रुपीस 200 एठी केते लागुतला मार्केट रे 400 जेतोला हमें रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करथले को रॉ मटेरियल को वेट गेनिंग रॉ मटेरियल को सॉरी वेट लूजिंग रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करथले हमर कॉस्ट अधिका पडुतला किंतु जेतो बळे वेट लूजिंग रॉ मटेरियल को हमें मार्केट को ट्रांसपोर्ट न करिकी वी आर कीपिंग इट नियर द सोर्स
we are keeping the industry near the source, हमें देखो जे हमारा transportation cost रे बहुत पैसा बंची जाउची, right? So what Weber said that the weight losing raw materials, weight losing industries should be located where? Near the source of raw material. Near the source of raw material. For example, एबे आपण आयरन एंड स्टील देखंदु, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कोठी अछि? ओडिसा रे अछि, झारखंड रे अछि, अधिका ओडिसा झारखंड ए जगह रे अधिका लोकेटेड अछि. काहे कि अधिका लोकेटेड अछि? बिकॉज मुआर नोट्स देई देबी, ठीक अछि, एटा देबिनी मु आर रिटर्न नोट्स देई देबी. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कोठी अछि? ओडिसा झारखंड माने छोटनागपुर प्लेट्यू, ओडिसा झारखंड एक्सेट्रा. व्हाई? Because we have the raw material here. Because we have the raw material here. Hence these industries are located near the raw material. ठीक अछि. Similarly एबे भाबंदु weight losing raw material जदि थिबो, sorry weight gaining raw material जदि थिबो. Similarly weight gaining raw material को मार्केट को हमको नबा पे कोन होबो? तार कॉस्ट बहुत अधिका लागि जिवो. So what we need to do, we need to weight gaining raw material जोटा थिबो ताकू हमको मार्केट जदि हमें ताकू इंडस्ट्री जदि हमें सोर्स पाखरे बसेबा ताले कोन होबो? सेटा वेट गेन करि जिवो आ ताकू मार्केट को नबा पे बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिका पड़िबो. हेंस what we need to do, जेतले वेट गेनिंग रॉ मटेरियल रहिला, जेतले वेट गेनिंग रॉ मटेरियल रहिला, we need to locate it near the market. I guess this is clear. एटा समझ क्लियर है गेले ए पॉइंट. रॉ मटेरियल ए दुटा पॉइंट समझ क्लियर है गेले. यस Yes, sir. आ जदि फुटलूज इंडस्ट्री हला ताले सेटा कोठी हमें रखि परिया? Anywhere. Anywhere between the market and anywhere between the market and the raw material. करेक्ट, राइट. एटा आपण बुझी गले समस्त. सो रॉ मटेरियल टा बहुत इंपोर्टेंट आउ इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट डिसाइड्स द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज. ओके, बट एबे कोन होउची? हमरो रॉ मटेरियल सोर्स रु भी दूरे रे धीरे धीरे इंडस्ट्रीज रही परची. फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल दोची. फॉर एग्जांपल जापान रे आयरन नहीं, but still it has good number of iron and steel industries. काहे कि anyone? काहे कि एटा ही परची एबे जापान काहे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जापान रे काहे कि अछि, even though it does not have raw material that is yes, very good, because of transportation. For example हमरो साउथ रे गोटे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अछि, विशेषरिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कर्नाटक रे. तो सेटा कोस्ट सेठी कोन होची? सेटा कोस्टल रीजन रे माने कोस्ट को तार एक्सेस भलो अछि. तो विशेषरिया आयरन एंड स्टील प्लांट रु कोन हुए? सॉरी सर विशेषरिया स्टील प्लांट कोटे? हां कोन सर भाईजैक स्टील प्लांट भी. यस यस यस. मु विशेषरे आ गोटे कथा कहबी, सॉरी एबे मु विशेषरे भूल रे कहि देली. वाइजैक स्टील प्लांट रु कोन हुए? हमरो जापान को हमरो एक्सपोर्ट हुए. ओके, सेटा हेई परछ. आउ जापान कोन करे? जो स्क्रैप आयरन वगैरह साधु रु भी बनाए. That's a different thing, but this is a reason कि ट्रांसपोर्टेशन बॉडी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क भलो ही जिबारु कोन होची? एबे हमरो रॉ मटेरियल रो इंपोर्टेंस टा फैक्टर कमुची, बट स्टिल इट इज द मेजर फैक्टर. ठीक अछि. विशेषरे आ गोटे दिनस सेटा एनर्जी रिलेटेड मु पर कहबी सेटा. Okay, so you understood that the first factor and the most important factor is
your raw material, right? Second factor, let's discuss about electricity. Okay, so electricity एटा भी गोटे major factor कहीं, as you know that this is the energy source. This is the energy source for your industry. This is the energy source. आगरू जेमती कि हमर इंडस्ट्रीज देखिए बहुत अधिका कोल जोठी अछि, कोल सोर्स पाखरे बेस्ड होतला. Industries were based near the coal source. Why? Because this coal source was giving the energy that was required. This coal mines were the source of energy for industries, right? तो सेति में कोन होतला, कोल सोर्स पाखरे इंडस्ट्रीज को बेस करा होतला. बट फॉर एग्जांपल जेमति कि राइन वैली रे जेटे आयरन कोल दीटा का अवेलेबल, तो से रीजन रे बहुत अधिका हमर इंडस्ट्रीज देखिया को मिलुतला. बट एबे कोन होउची, एबे हमर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड आसी गलानी, राइट? इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड आसी गलानी. तापरे पाइपलाइंस, पेट्रोलियम पाइपलाइंस, नेचुरल गैस पाइपलाइंस ए सब भी डेवलप हे गलानी. तो सेथि पई एबे एनर्जी सोर्स पाखरे बसिबा आउ बेसी रिक्वायरमेंट नाही. रॉ मटेरियल मु कहली कि स्टिल इंडस्ट्रीज आर बीइंग लोकेटेड नियर द रॉ मटेरियल, बट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड आसिला परे आउ एबे ई जो रिक्वायरमेंट कि इलेक्ट्रिसिटी पाखरे बसिबे, तो से जिंसटा माने एनर्जी सोर्स पाखरे रहिबे, से जिंसर इंपोर्टेंसटा कमी गला. ओके, दिस इज एटा बेसिक किछि कष्ट पार्ट नाही, इजी पार्ट. तो आउ मु जानु जे आपण बुझी भी पारथुबे. Next, let's discuss about labor. Okay, so tell me कि labor केमते impact करे energy sorry industrial location. Sir, cheap labor preferable because labor cost be input cost रे add है. Okay, cheap labor, you need cheap labor. That's why Also skilled labor. Yes, that's what I was coming to. Cheap labor, as you know, why the industries want to set their why the companies want to set their industries in India, because of this, because we have abundance cheap labor, availability of cheap labor, right? तो एई जिंसटा लेबर पई बहुत इंपोर्टेंट, माने लेबर रे एई जिंसटा बहुत इंपोर्टेंट. किंतु खाली लेबर हेले लाभ हबनी, ता संगे रे आपनकर एचआरडी भी दरकार, माने ह्यूमन रिसोर्स डेवलप भी हेइथिबा दरकार. फॉर एग्जांपल आईटी कंपनी आसी गलानी, एठी लोकन को कंप्यूटर चलेई आसु, किछि लाभ नै. लेबर चीप अवेलेबल हेले भी किछि लाभ नै जदी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेइ नै. दैट मींस स्किल्ड लेबर. ठीक अछि, स्किल्ड लेबर. सो labor, we are not only talking about the remuneration. We are not talking about the remuneration here. That means the payment that we make to the labor. Khali remuneration nuha, not only remuneration, but also the skill and productivity of the labor. For example, let's say India रे दिनकू 2000 टका दउछन्ती. ठीक अछि, सेही 2000 टका लेट्स से किने जापान रे दउछन्ती 2500. दैट डजंट मीन कि इंडिया रे आसी बसी पड़िबे. भाबंतु इंडिया रे एमाने गोटे दिन रे 10 यूनिट्स ऑफ काम करछन्ती, कि जापान रे सेही 2500 रे 20 यूनिट्स ऑफ काम करछन्ती. तो ऑब्वियसली दिस इज चीपर, राइट? सो वी नीड चीप एज वेल एज स्किल लेबर. फॉर एग्जांपल मु गोटे कथा कहूची, आउ एथरे आउरी भी किछि जिंस आसे. फॉर एग्जांपल लेबर डिसिप्लिन केते अछन्ती, जेमति कि आपण मन जानिथिबे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ए रीजन रे हमर लेबर यूनियंस बहुत स्ट्रांग. लेबर यूनियन बहुत स्ट्रांग. आ एठी फ्रीक्वेंट लॉकआउट्स हुए, लेबर स्ट्राइक्स ए सब बहुत अधिक हुए, राइट? तो सेथि पई आगुर आपण जानछन जेठी कम्युनिस्ट पार्टी थिला वेस्ट बंगाल रे, तो लेबर स्ट्राइक्स वगैरह बहुत अधिक होतला.
ठीक अछि आउ एते एटा भी जानिथिबे तो सेटा परे आसीबो पॉलिटिकल रे पड़ी लेबर स्ट्राइक्स अधिका बहुत अधिका होबे जेतले बहुत अधिका लेबर स्ट्राइक होबो तो कोन होबो इवन तो चीप लेबर अछि किंतु ए सब जिंस पई कोन होबो इंडस्ट्रीज रो लॉस होबो तो इंडस्ट्री केबे भी चाहिबोनी कि एमते गोटे जागा रे जाई कि लोकेट करिया में नहीं जोटी जो लेबर अछि से डिसिप्लिन नै फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल दउची जापान रे गोटे कंपनी रे लेबर माने स्ट्राइक कले लेबरर्स माने जापान रे गोटे कंपनी रे स्ट्राइक कले ओके बट देखो तांकर डिसिप्लिन एते भलो ओके से माने कोन कले जेतले स्ट्राइक कले दैट वाज अ सू कंपनी एक्चुअली दैट वाज अ सू कंपनी गोटे सू कंपनी रे से माने स्ट्राइक कले से माने कोन कले सेठी से माने स्ट्राइक रे काम बंद कले से माने कोन कले खाली राइट लेग रो शूज खाली राइट फुट रो शूज प्रोड्यूस कले स्ट्राइक कले और खाली राइट लेग रो शूज प्रोड्यूस कले अबिका देखो एथिरे लाभ कोन हला कि प्रोडक्शन बंद हेलानी ठीक अछि कंपनी रो लॉस एबे जाय हेनी प्रोडक्शन बंद हेनी कंपनी रो लॉस हेनी किंतु कंपनी ए जिंस को मार्केट भी पठै परियो बिकॉज खाली गोटे लेग रो शूज बाहरची आफ्टर द कंपनी agreed to the demands what they did they started producing the left leg shoes or left foot shoes ठीक अछि देखो एटा केते बडे बढ़िया वे टू show your grievance as well as to not hamper the interest of the company right तो कि काहे कि गोटे लोक जाई कि एठी न सेट करियो काहे कि इंडिया सेट करियो जोडी जाई कि बाडी की भांगी दियो लॉक कर दियो मैनेजर को मार दियो ये सब जगह रे काहे कि जने एमते जगह रे सेट न करियो अंडरस्टूड कि लेबर के कोन होबा कथा बोथ चीप एज वेल एज स्किल एज वेल एज डिसिप्लिन तो लेबर रो इंपोर्टेंस बहुत अधिक अछि आ लेबर एटा होबा दरकार बुझिले एटा समस्या ए पॉइंट बुझा गला यस Yes, sir. ओके नेक्स्ट transportation infrastructure or transportation and communication okay communication infrastructure एटा केमती इंपोर्टेंट एटा डिटरमाइन करे कि how fast and efficiently you can move your goods from the industries to the market and from the source region to the industries so this is why your transportation network is important कि आपण सोर्स रु इंडस्ट्रीज को माने रॉ मटेरियल सोर्स रु इंडस्ट्रीज को केते एफिशिएंटली ट्रांसफर करि परचंती आ इंडस्ट्रीज रु केते एफिशिएंटली मार्केट को ट्रांसफर करि परचंती राइट फॉर एग्जांपल आपण माने जानथिबे कि सुगर केन वंस आपण जेतले हार्वेस्ट हे गला तडे आपण काटी देले सुगर केन को तापरे आपण को बहुत जल्दी एटा को इंडस्ट्री को नेकी जीवा को पड़िबो फाइ काहे कि रीजन कोन काहे बहुत जल्दी इंडस्ट्री को नेकी जीवा पड़िबो सुखी जीवा पोको लागि जो हां सुक्रोज कंटेंट तार बहुत माने सुक्रोज कंटेंट ता कमी जाय ठीक अछि सुगर कंटेंट ता कमी जाय यदि सुक्रोज कंटेंट कमी जिवो ऑब्वियसली सेटा इंडस्ट्रियल लॉस कारण सेही आखुरु से माने जति कि चीनी काढी पारथांदे ताटू बहुत कम चीनी काढे राइट सो दिस इज व्हाई योर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इज वेरी इंपोर्टेंट तो सेही पई देखिबे जेतो बळे हमरो ब्रिटिशर्स जेतो इंडिया को आसीले तो से टाइम रे हमरो इंडस्ट्रीज सब देखिबे सेमतिया रीजन रे हेतिला जो रीजन रे की हम पाखरे पोर्ट्स थिला ठीक है जो पोर्ट्स डेवलप करियो फॉर एग्जांपल कोलकाता फॉर एग्जांपल बॉम्बे राइट तो ए एरिया रे कोन होतला हमरो इंडस्ट्रीज बसा होतला द रीजन इज काहे कि एठू से माने कोन करि परिबे आराम से एक्सपोर्ट करि परिबे आउ इंपोर्ट भी करि परिबे राइट आराम से एक्सपोर्ट करि परिबे आउ इंपोर्ट करि परिबे
तो सेही पई एई रीजन रे कोन होतला हमर इंडस्ट्रीज बसुतिला आउ गुटे जिंस फॉर एग्जांपल कि चीप ट्रांसपोर्ट ओके चीप ट्रांसपोर्ट खाली एमिति नाही कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होबा दरकार फॉर एग्जांपल इंडिया रो गोटे बड़ प्रॉब्लम कोन ट्रांसपोर्टेशन रे The railway is not like contributing to its potential. Okay, railway is not contributing to its potential as well as another major problem is major problem is that the most of the transportation is been done through roads and this is the costliest mode of transportation. This is the costliest mode of transportation. ठीक है सेति पई कोन होची जिंस आपनकर चीप रहइबनी तो चीप न रहिले कोन होबो कॉम्पिटिटिव होबनी ठीक अछि कॉम्पिटिटिव न होले ऑब्वियसली इंडस्ट्री विल बी लॉस तो हमरो मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन होची सेटा रोड थ्रू रोड्स होची आपण जले इंफ्रास्ट्रक्चर पढिबे आई गेस सौरभ सर आपनकर नेबे सेतले आपण आ विषय डिटेल रे पढे ठीक अछि तो रोड्स आपनकर कोन होची बहुत कॉस्टली रोड ट्रांसपोर्टेशन आउ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इज रिलेटिवली चीप बट इज नॉट एफिशिएंट आउ गोटे जिंस भी आपण जानिथिबे कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन हुए व्हाट इज दिस एथिरे कोन क्रॉस सब्सिडाइजेशन हुए कि हमर जो पैसेंजर्स ट्रेन सेथिरे हमर कोन हुए जो फेयर नियंदी सेटा जो हमर गुड्स ट्रेन रु सब्सिडाइज करियो ट्राई करन समान राइट तो भाबंतु सेथुरु कोन हबो तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन रु आउरी आपनकर गुड्स रो कॉस्ट बढ़ी जे जो गुड्स रो कॉस्ट आउरी बढ़ी जेबो ठीक अछि तो से जिंस रो प्रॉब्लम अछि तो बेस्ट वे फॉर ट्रांसपोर्टेशन इज inland waterway transportation within the country. This is the best way of transportation and the cheapest mode. USA रे आपण जदि जानथिबे सेंट लॉरेंस सू कैनल ठीक अछि ई सबु चैनल्स एटा कोन तंकर इनलैंड वाटरवे रे बहुत हेल्प करे तो इनलैंड वाटरवे रे एगुडा जो हेल्प करे तो कोन हुए से माने हिंटरलैंड रु इजीली इंडस्ट्री को जिंस पठे दियन ठीक अछि हिंटरलैंड रु इजीली माने ग्रेट लेक रीजन रे जहा भी प्रोड्यूस हला सेटा तांकर फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज योर यूएसए ठीक अछि आपण जानथिबे 8 पार्ट ता आपनकर न्यू एटा हां एई पार्ट ता आपनकर न्यू इंग्लैंड रीजन तो जोठी की मेनली मार्केट अछि ठीक अछि आउ एठी किछि इंडस्ट्रीज अछि ठीक अछि ए रीजन रे जोठी ग्रेट लेक रीजन रे ठीक अछि आ एठी कोन होय हमर जो सेंट लॉरेंस कैनल सू कैनल ए सब ए एरिया रे अछि जोटा की इजीली इनलैंड वाटरवे थ्रू रे मार्केट को जिंस से माने पठै पारन एज वेल एज सेंट लॉरेंस कैनल पूरा आसी की एपटे कोन होइछि नॉर्थ अटलांटिक को लागिछि तो एबे देखंतु तने पूरा चीपली ट्रांसपोर्ट कर देले तांकर इनलैंड वाटरवे रु पूरा एक्सपोर्ट पोर्ट को ट्रांसपोर्ट कर दे आ पोर्ट रु बाहर ट्रांसपोर्ट कर दे किंतु इंडिया रे ए जिंसर प्रॉब्लम अछि इनलैंड वाटरवे हमर बहुत भलो नाही ठीक अछि फॉर एग्जांपल हुगली रे अछि राइट किंतु बाकी जगह रे ते नाही आ एठी भी बहुत अधिका सिल्टिंग हे गलानी हुगली रे भी बहुत अधिका सिल्टिंग हे गलानी तो सेटा हला प्रॉब्लम तो हमहु कोन करे दरकार इनलैंड वाटरवे डेवलप करिया दरकार ठीक अछि हमें जानि छे आपण गोल्डन क्वाड्रिलेटरल विषय जानिथिबे राइट तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रे आपण को ट्राई करछन कोन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप करिया राइट अक्रॉस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपनकर कोन करछन अलोंग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स सेटअप करिया सो दैट efficiently they can transport goods from one region to another ठीक अछि बुझाला ए पॉइंट Yes, sir. ओके तापरे कोन कोन हेला ट्रांसपोर्टेशन हे गला ओके नेक्स्ट आ गुटे बड़ जिंस हला हमर मार्केट ऑब्वियसली मार्केट नथिले आपनकर इंडस्ट्री माने इंडस्ट्री बसे काहे की बिकॉज़ ऑफ मार्केट आउ
आपण मन जानछन्ती कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री how it has the potential of the market is huge. The potential of the market is huge, right? Hence that is why most of the country is focusing to establish their industry in India. कहीं ग्रोइंग माने डेवलपिंग कंट्री तो मिडिल क्लास एबे कोन ग्रो करिवे जेते बेसी मिडिल क्लास सेते बड़ मार्केट बहुत अधिका गरीब लोक थिले भी किछि लाभ नहीं कहीं से माने कंज्यूम करि परिबेनी बहुत अधिका राइट तो मिडिल क्लास जेते अधिका हेबे सेते भलो आउ कहीं आउ बहुत रिच क्लास हेले भी कंज्यूम हबो बट गोटे मार्केट गोटे सैचुरेशन आसे फॉर एग्जांपल यूएसए मार्केट ठीक अछि तांकर मार्केट रे कोन हबो गोटे सैचुरेशन आसीयो कहीं डेवलपिंग नेशन रे जेतोले गोटे लोक राइज करथिबे माने जेतोले डेवलप होउथिबे जेतो डेवलपिंग थिबो सेतोले कोन हबो रिक्वायरमेंट्स आर ह्यूज तो सेथि पई डेवलपिंग मार्केट को बहुत अधिका फोकस करा हुए आउ जोडी डेवलप जोडा जो एरिया पर डेवलप हे जाईछि सेठी कोन ऑलरेडी मार्केट सैचुरेट हे जाईथे ठीक अछि माने इंडस्ट्रीज आस जाईथिबे सब आस जाईथिबे सेथि पई से एरिया रु बेटर से माने डेवलपिंग रीजन रे फोकस करनी फॉर एग्जांपल जेमति यूएसए कंपनीज एक्सेट्रा यूके कंपनीज की जहां भी वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया पर काई फोकस करछनी कारण डेवलपिंग कंट्री एंड द पोटेंशियल ऑफ मिडिल क्लास इज ह्यूज राइट तो सेथि पई कोन हुए मार्केट ता बहुत इंपोर्टेंट अब मुझे एमती कहितली कि मार्केट को रॉ मटेरियल पहुंचेबा और रॉ मटेरियल मार्केट को माने मार्केट को रॉ मटेरियल पहुंचेया एंड सॉरी फिनिश गुड पहुंचेया दैट इज very much required so जोटी कनेक्टिविटी थिबो भलो कनेक्टिविटी थिबो मार्केट सेठी अधिका हमर रॉ मटेरियल पहुंचे फॉर एग्जांपल दिल्ली अपन दिल्ली चारि पटे देखिबे पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट अछि इंक्लूडिंग दिल्ली चारि पटे पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट अछि काहे कि कारण दिल्ली सेठी गोटे बहुत बड़ मार्केट हिसाब रे प्ले करे दिल्ली एनसीआर रीजन दा बहुत बड़ मार्केट हिसाब रे सेठी रोल प्ले करछि सिमिलरली मुंबई ओके मुंबई पाखरे जो कॉम्प्लेक्स अछि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सेडा काहे अछि बिकॉज़ मुंबई एक्ट एज एन मार्केट फॉर द गुड्स राइट तो मार्केट रो इंपोर्टेंस जानिले नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी केमति बा माने आ ऊपर काहे डिपेंड करे म आगो कहि देइथिली कि हमरो जो भी प्लांट अछि मॉडर्न लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तांको पई एटा गोटे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को पई वाटर इज अ मेजर रिक्वायरमेंट राइट तो एबे कोन होबो जेतले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आसी गला भाबन आपण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आसीला तो तांको पई वाटर अवेलेबिलिटी बहुत अधिक दरकार नहले कोन होबो जदी वाटर अवेलेबिलिटी नाही ताले कोन होबो ऑब्वियसली दोज इंडस्ट्रीज विल नॉट सर्वाइव हियर फॉर एग्जांपल आपणकर वेस्ट बेंगल रे ठीक अछि वेस्ट बेंगल रे वेस्ट बेंगल छाडंतु मु आ गोटे इंडस्ट्री हरियाणा रे बेवरेज इंडस्ट्री थिला बेवरेज इंडस्ट्री आई गेस कोको कोला की पेप्सी ए दी जण भितरु कि जणे हरियाणा रे थिला तो से माने कोन करथले कोको कोला थिला तो ए माने कोन करथले से एरिया रे बहुत अधिका वाटर यूज करिया स्टार्ट कर देथिले ठीक अछि जति की परमिशन थिला ताटू अधिका वाटर यूज करिया स्टार्ट कर देथिले એટલે परमिशन रो अधिका वाटर यूज करिया स्टार्ट हले से एरिया रे कोन हला वाटर स्कैर्सिटी हला से एरिया रे कोन हला वाटर स्कैर्सिटी हला तापर कोन हला कोकोला इंडस्ट्री को ही सेठी बंद कर राइट कोकोला इंडस्ट्री को सेठी की बंद कर देले तो रीजन कोन कि वाटर स्कैर्सिटी तो क्लाइमेट चेंज जो होउची एबे जो क्लाइमेट चेंज होउची this is becoming a very important factor for example यदि आपण जानि थिबे जेतिक सिटीज अछि मेट्रो सिटीज लेट्स से दिल्ली यदि आपण जानि थिबे दिल्ली रे वाटर प्रॉब्लम बहुत अधिक अछि बहुत अधिक मींस किछि किछि दिन माने आ एटा मु विंटर कथा कहूनी ऑब्वियसली विंटर एते प्रॉब्लम माने समर रे दी दिन तीन दिन पानी आसे ही नहीं मझरे मझरे एमती हुए जदि अपन जानते ओल्ड राजेंद्र नगर रे से एरिया रे दी दिन तीन दिन पानी आसीबनी ताबे लोक कोन करनी सेटु पानी जो किना पानी यूज करी की
किणा पानी यूज करनी अबिका भाबंतु दिल्ली चारिपटे जो इंडस्ट्रीज अच्छी ओके when there is this water scarcity what will happen these industries will not able to survive there so climate change is making this factor it is increasing the importance of this factor so in future this will determine the location of industries more than the other factors such as raw material au apanko energy source ru adhika apanko water source ta besi important he jibo ठीक अछि pollution होची ठीक अछि फॉर एग्जांपल मुंबई रे कोन हला अपन जानि बॉम्बे रे बहुत बहुत गुडे इंडस्ट्रीज थिला हमर स्टार्ट हेतला कॉटन रु तापर धीरे धीरे एग्लोमरेशन इंडस्ट्रीज आसी गला मु कहबी कोन एग्लोमरेशन कोन ए सब कहबी धीरे धीरे एग्लोमरेशन हे गला सेठी एग्लोमरेशन हेबारु कोन हला सेठी वाटर रिसोर्स बहुत अधिका पॉल्यूट हे गला कारण ए माने डिस्चार्ज कले सेठी तापर कोन हला तापर जो इंडस्ट्रीज आसिले एठी एते पॉल्यूशन हे गला कि से माने सेहिति पई धीरे धीरे कोन कले गुजरात शिफ्ट होबा को लागि ए इंडस्ट्रीज धीरे धीरे कॉटन इंडस्ट्री एक्सेट्रा एठी एग्लोमरेशन रो पॉल्यूशन आउरी माने एग्लोमरेशन आउ जहा भी प्रॉब्लम थिला वन ऑफ द रीजन वाज दिस पॉल्यूशन ऑफ वाटर सेन कोन हले गुजरात शिफ्ट होबा को लागि गले ओके सो this is an very important source आउ जते हमें क्लाइमेट जते चेंज हे जिवो जते वाटर फ्रेश वाटर रिसोर्स जते कम हे जिवो आरो इंपोर्टेंस जते हमरो बॉडी बॉडी जिवो ओके नाउ लेट्स कम टू क्लाइमेट क्लाइमेट ता केमति इंपैक्ट करिवो यस am I audible actually na yes yes okay Yes, sir. moderate climate human efficiency में भलो तो सेठी भी yes moderate climate efficiency पे भलो फॉर एग्जांपल आप जदी आपण देखिए शीत दिन आपण बहुत अधिक काम कर करिए खरा दिने ओडिसा रे तो छाडंतु माने खरा दिने बैंड बाजी जाय पूरा टिके काम करथिबे झाळ माने ओडिसा रे एमति वे कि मु गाधेई की बाहरी थी भी मोदेरु झाळ बोथो राइट तो सेटा बहुत इंपैक्ट करे आपनकर प्रोडक्टिविटी ऊपर क्लाइमेट सेथि पई हम देखिबे जो वेस्टर्न कंट्रीज जो मिड लैटिट्यूडनल रीजन रे जो टेम्परेट रीजन रे ठीक अछि सेठी कोन टेम्परेट रीजन रे प्रोडक्टिविटी बहुत अधिक थाए काहे की कारण सेठी एते जल्दी टायर्ड हेबेनी राइट एते जल्दी टायर्ड हेबेनी ह्यूमिडिटी बहुत कम थिबो राइट टेम्परेचर बहुत कंड्यूसिव थिबो तो सेथि पई कोन हबो से जगह रे आपनकर प्रोडक्टिविटी बहुत अधिका हबो आउ कोन हबो क्लाइमेट डिटरमाइन्स योर vegetation climate determines your vegetation for example let's say equatorial climate okay equatorial climate रे ए जिनसटा भूली जानदो कि प्रोडक्टिविटी कथा भूली जानदो एबे मते कोंतु ता परे भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट रे आपण इंडस्ट्री बसेबे कि प्रोडक्टिविटी कथा भूली जानदो कि लोक काम करि परिबे नै से फैक्टर ता छाडी दे कि मते कोंतु ता परे भी आपण इक्वेटोरियल क्लाइमेट रे इंडस्ट्री बसेबे कि Sir, like some particular type of industry, for example, palm oil industry, that can be established because it will be a source of raw material. Okay. But other type of industry it is not conducive because of the daily rains and all. So that yes. is also. Yes. किछि इंडस्ट्री बसई पारे but that industry will also face many problems such as let's say Amazon region कथा भाबंदु सेठी कोन होबो आपण आज इंडस्ट्री बसई थिबे जो रेनफॉल अछि जो ह्यूमिडिटी अछि तो कोन होबो आपनकर बिल्डिंग बहुत जल्दी करोडै जिवो राइट तापरे से एरिया को आपनकर मेंटेन करिवा पई भी बहुत अधिका खर्च लागिवो ओके इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव व्हाई आजी सफा करचंती काली पुणी गछ उठी गलानी बिल्डिंग राइट सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू establish industries there because you need to remove the forest and everything and in those regions the maintenance of the infrastructure will be very high right so se region re gote to apanଙ୍କର productivity as well as au gote ki those climate is not conducive for the infrastructure also right
आपण ଏବେ ସାଇବେରିଆନ ରିଜିୟନ ରେ ଗଲେ ସେଠି ଲୋକ କମ୍ବଳ ଘୋଡେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସକାଳେ ଆପଣ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘର ବାଡୁଥିଲେ ଆସ କାମ କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ରାଇଟ୍? ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବସେଇ ପାରିବେନି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ another problem। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ କହୁଛି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ୍ଲାଇମେଟ ର କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସୁଛି। थिंक अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज रे सी माने सी सरफेस रे कोन तार इंपैक्ट होची, सी रो टेम्परेचर रे इंक्रीज हो जाउची, सी टेम्परेचर, राइट? ओके, लेट्स से दिस इज योर इक्वेटर 0 डिग्रीज, एटा आपनकर 20 डिग्रीज, दिस इज योर 30 डिग्रीज, एटा ला 45 डिग्रीज। ओके, एबे कोन तो आगुरु एठी जो बायोडायवर्सिटी देखुथिले आपण, ठीक अछि, एठी जो बायोडायवर्सिटी देखुथिले, फॉर एग्जांपल फिश थिला, श्रिम्प्स थिले, एक्सेट्रा जहां भी थिले 20 डिग्रीज रे। अबिका जेतोले ए एरिया रे टेम्परेचर बढ़ी जाउची, जेतोले 20 डिग्रीज लैटिट्यूड रे आपनकर टेम्परेचर बढ़ी जाउची, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल दिस एनिमल्स, aquatic animals do? Yes, They'll migrate to more suitable climate. yes, they will migrate towards the north। काहे कि 0 जते इक्वेटर जते इक्वेटर पाखु जते जिवे सेते गरम हबो, तो जते टेम्परेचर बढ़ुची एरिया रे बहुत अधिक टेम्परेचर लैंड 20 रे, सान कोन करे 30 रे पळेबे, 30 रे जे थिबे से कोन करिवे 45 को पळेबे। नाउ जस्ट थिंक अबाउट द जो ये तमरो फिशरी इंडस्ट्री हला। फॉर एग्जांपल भाबो एठी हमरो इलिसी मिलुची, सेति पई कि चुंगुडी मिलुची, सेति पई कोन हला एठी गोटे इंडस्ट्री बसई छन्दी कि भाई एठी हम इलिसी और चुंगुडी खाइबो, माने बन माने प्रोसेसिंग हबो जहा भी हबो। से धरिया गला बेलको से माने एठी मिलु नांदी, से ऊपर पळै छन्दी भासी माने पहरी। तबरे इंडस्ट्री ऊपर कोन इंपैक्ट हो, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ क्लाइमेट चेंज कैन इंपैक्ट द इंडस्ट्रीज, because now we are seeing this, many aquatic animals they are migrating to moderate to north because of rise in sea temperature, right? Right, so that will lead to that will be problematic for these industries, those who are dependent on this raw material। बुझा हला क्लाइमेट केमती इंपैक्ट करछि, गोटे तो प्रोडक्टिविटी कहली, गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर केमती इंपैक्ट करिवो, आ गोटे क्लाइमेट चेंज केमती बायोडायवर्सिटी कंडीशंस पई केमती इंपैक्ट करछि। बुझा हला से पॉइंटटा? यस, Yes, sir. ओके। सो नेक्स्ट, रिलीफ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी टोपोग्राफी केमती इंपैक्ट करियो, फॉर एग्जांपल हिमालयन रीजन, ठीक अछि, J&K, उत्तराखंड, और लेट्स से आपनकर नॉर्थ ईस्ट, इटी कोन प्रॉब्लम, द टोपोग्राफी इज वेरी हॉस्टाइल, द टोपोग्राफी इज वेरी हॉस्टाइल, राइट? माउंटेन्स अछि, ठीक अछि, माउंटेन्स रे इंडस्ट्री बसेबा कष्ट, राइट? सेठी लैंड क्लियर करिकी सेठी इंडस्ट्री बसेबा कष्ट, आउ लैंडस्लाइड वगैरह भी प्रॉब्लम अछि, किंतु सेही जिंसटा प्लेन रे भाबंतु, प्लेन रे कोन द लैंड इज वेरी इजी टू वर्क इन, ठीक है, सेठी आपण इंफ्रास्ट्रक्चर आराम से बसेई परिवे। बट एठी कोन हबो, एठी टोपोग्राफी हॉस्टाइल अछि, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपण हिमालयन रीजन रे इंफ्रास्ट्रक्चर कोन करबे आपण इजीली बसेई पारिबेनी, राइट? सो that way the topography also impacts the location of the industry। आपण जानि थिबे कि उत्तराखंड एक्सेट्रा जो हिमालयन रीजन रे अछि, गवर्नमेंट कोन करे, जदी आपण भाव नॉर्थ ईस्ट रे इंडस्ट्री बसेले, इट गिव्स सम टैक्स सब्सिडीज, एटा आपण जानि थिबे, नॉर्थ ईस्ट जदी आपण इंडस्ट्री बसेबे यू विल गेट सम टैक्स सब्सिडीज, राइट? काहे टैक्स सब्सिडी को दोजी गवर्नमेंट, कारण एठी की इंडस्ट्री जीवा को चाहू नांदी, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। गोटे तो इट इज कट ऑफ फ्रॉम द मेनलैंड, चिकन नेक संगरे जोड़ा हेकी अछि, राइट? आउ टोपोग्राफी सेठी भलो नै, उत्तराखंड रे टोपोग्राफी भलो नै, तो सेठी इंडस्ट्रीज जिबेनी, बट गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडीज
in this region कि हाँ जदि एई पर्टिकुलर इंडस्ट्री गले ताले से सॉरी जस्ट अ सेकंड जदि एई पर्टिकुलर इंडस्ट्री गले ताले सेठी कोन हबो subsidies पाइबे so that's how the topography also impacts next government policies or let's say the political atmosphere also ei dita tik alga political atmosphere and government policies ita kuhuntu mate kemti kono impact करे yes Sir, Sir, for example, sir, ease of doing business, so that is impacted by the government policies. okay ease of doing business okay fine Sir, other policies, for example, labor laws, land acquisition rules, those also. okay okay very good labor laws alla land acquisition alla javi आरो गोटे बहुत बढ़िया एग्जांपल नानो वेस्ट बेंगल रे तो लैंड एक्विजिशन करिया को देलेनी okay government was not at all supportive at the last moment they have to withdraw from there तापर हन गुजरात पड़ेले right तो this is an example of that ठीक अछि जेमति लेबर लॉज हम आगुरु लेबर डिसिप्लिन विषय कथा होले वेस्ट बेंगल रे काहे केते लेबर स्ट्राइक बिकॉज़ तांकर हिस्ट्री अछि माने सीपीआई सेठी थिले एंड यू नो दैट कम्युनिस्ट दे एनकरेज ऑल दिस एक्टिविटीज ओके सो सेति पई सेठी बहुत इनडिसिप्लिन लेबर बहुत इनडिसिप्लिन ओके फॉर एग्जांपल भाबा हठात आज तमे सोइच आज आसी इंडस्ट्री बसैछ काली कंट्री डिमोनेटाइजेशन तापर न गवर्नमेंट कोन कहले कि ओके हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हमें लगेवा स्टार्ट कर दो ओके आगुरु अपन जानथिबे कि शेयर मार्केट रे लागु नथला एबे किंतु लागु छै राइट तो हठात अपन आछचंदी देश को अपन जाने देखिदेले कि अरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगले एबे कोन हबो एबे एफआई आसिया बंद हो जो क्यारे मैंने आगु टैक्स लगन टैक्स लगन आजीवन शेयर किणवानी राइट सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम with government policy जदि government policy very if it is very whimsical आज गोटे जिंस कलेनी काली गोटे जिंस करलेनी जदि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाही फॉर एग्जांपल एबे just think of the period in late 80s and mid 90s ठीक अछि लेट 80s और मिड 90s कोन होतला राति रे गोटे गवर्नमेंट दिन रे गोटे गवर्नमेंट राइट तो से पीरियड से टाइम रे देयर विल बी नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काहे कि कारण समस्तंगर अलगा अलगा मैंडेट थिबो मैनिफेस्टो अलगा अलगा थिबो से माने कोन करबे आसीबे गवर्नमेंट जेता नुवा गवर्नमेंट फॉर्म होबे सेने तांकर पॉलिसीज चेंज कर देबे तो पॉलिसीज चेंज करले कोन होबो ऑब्वियसली will be impacted this industries will be impacted ठीक अछि तो सेहिति पई कोन स्टेबल पॉलिसीज दरकार पॉलिसीज शुड बी स्टेबल आ एटा कतडा होबो जेता बेले स्टेबल गवर्नमेंट थिबो राइट पाकिस्तान रे केते बडा स्टेबल गवर्नमेंट राइट कि तांकर केही भी 5 वर्ष एबे कंप्लीट करनांदी आजि जदि तांकर डेमोक्रेटिक रूलर अछंदी काली तांकर आर्मी आसी गलानी राइट आउ किछि दिन पर टेररिस्ट ताकू नै जिवे पाकिस्तान तार भी से टाइम आसु छी तो एई जिंस तो जेतो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नथिबो अफगानिस्तान रे जाई काहे की इंडस्ट्री बसे राइट सो दैट इज द थिंग दैट द पॉलिसी शुड बी वेरी स्टेबल इट शुड नॉट बी whimsical राइट तो सेही एटमॉस्फियर रे कोन हबो गोटे इंडस्ट्री जाई की इच्छा करियो कि टू एस्टैब्लिश देयर इंडस्ट्रीज देयर ओके तो पॉलिसीज भी हे गला प्लस पॉलिटिकल एटमॉस्फियर दैट मींस जदि भाबो सिविल वॉर होउची कि टेररिज्म हो जे अफगानिस्तान रे राइट सेमतिया रीजन रे सेमतिया कंट्री रे भी केही चाहिबेनी कि टू गो एंड एस्टैब्लिश देयर इंडस्ट्रीज ओके बुझा वाला yes, sir. okay so these were some of the factors that determines the location of industries okay so ए फैक्टर में अपन बुझे देली काली
नोट्स आपन देदेवी आउ तार नोट्स टा टेम्पलेट साइक्लोन नोट्स टा तो ऑलरेडी दे दीजिए आर नोट्स टा आपन देदेवी आउ कोन देबी आज आपन को वेजिटेशन रो हैंडआउट टा पठेबी vegetation handout. Next, I will be giving you handout of soil. किन्तु मुझे कही soil पूरा लास्ट सब जिन सरी गला एबे लागुच कि हाँ मोर तो रैंक 1 रू 50 भीतर आसी गला तापर अपन soil पढ़िए ओके कारण एथिबे मु कहूची जदी भी soil क्वेश्चन आस्ता हम जानि छी अपन माने प्रीलिम्स क्लियर करछनी soil रो सेति की नॉलेज अछि कि जहां भी क्वेश्चन आस्ता अपन लिखि दे ताटो अधिक की दरकार भी नहीं ओके तो वेजिटेशन टा पठेबी soil पठेबी आउ इंडस्ट्री रो नोट्स टा एटा आजि पठेबी इंडस्ट्री नोट्स काली पठेबी बिकॉज़ माय नोट्स आर नॉट इन दिस फॉर्मेट जो फॉर्मेट में आपण एबे जो दीटा क्लास है से फॉर्मेट रे ना ओके माय नोट्स आर इन डिफरेंट फॉर्मेट तो से नोट्स टा आपण को देई परिबी तो मु आर नोट्स आपण काली देबी एंड काली हमें पढिबा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन इंडिया इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस काली एटा फर्स्ट 15-20 मिनिट्स इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस पढ़िया तापरे हमें अर्थक्वेक वोल्केनिज्म आउ सुनामी पढ़िया काली क्लास टिके लंबा हो ठीक अछि जदी न सरला मु आ गुटे क्लास नै अर्थक्वेक वोल्केनिज्म सुनामी ए तीनटा पढ़िया साइक्लोन में सार देइछि ओके आउ गुटे जिंस मु आपन को गुटे असाइनमेंट देइथिले आगु रिगार्डिंग कोस्टल रीजन्स मन अछि कोस्टल रीजन्स रो असाइनमेंट देइथिले हम कहिथिले आ विषय किछि डिस्कस करिवि राइट आ विषय मते कोन डिस्कस करियर अछि ना आ विषय किछि जिंस डिस्कस करियर जदी काली टाइम होला ठीक अछि मला आ गुटे छोटो क्लास नेबी कोस्टल रीजन्स आ गुटे जिंस ट्राइबल्स ऑफ ओडिसा ए पार्ट ता मु नेक्स्ट नेबी ठीक अछि किछि डाउट अछि कार यस एनी डाउट्स okay fine so I'm then if you don't have any doubts I'm ending the class here okay? Yes, sir. Okay, thank you everyone, good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir.